advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna.
India as the forefront. India's at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people
in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, developed as vibrant institutes of excellence for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure. Manya Speaker, Sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff
for the 740 Ekalavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker. Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways.
This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, centre, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of
Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, video
KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities.
PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme, 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances.
Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus.
This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024.
आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them creditworthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores.
The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise.
To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly,
I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes.
I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore
to 37,000 crore in direct taxes, and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. One hour, 25 minutes. Item number 1, माननीय item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. तो ये ब्रेकिंग न्यूज बदलिला आयकर सीमा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये बड़ घोषणा करिसेंती 7 लाख जाए आयकर छाड़, जहाँ को सारा देशवासी अपेक्षा थिला, खास करी मध्यवित्तर अपेक्षा रहितिला, जेहेतु 2014 रु पाखापाखि 10 वर्ष हम परिवर्तन होई नथिला. 9 लाख रे 5% टैक्स एवं आयकर स्लैब आपन को कहि रखबू. 0 रु 3 लाख पर्यंत आयकर शून्य, 3 रु 6 लाख पर्यंत 5%, 6 रु 9 लाख पर्यंत 10%, 9 रु 12 लाख पर्यंत 15%, 12 रु 15 लाख पर्यंत 20%, 15 रु अधिक लक्ष आय रे 30% टैक्स देबाकू पड़िबो. ये आयकर स्लैब रे बड़ धरणर परिवर्तन. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो बड़ घोषणा करिसेंती बजेट रे, कारण ये घोषणा को समस्त अपेक्षा थिला एवं अर्थनैतिक विशेषज्ञ ये आकलन मध्य करुथिले जे आयकर स्लैब रे परिवर्तन होई पारे. मध्यवित्तर बड़ आशा थिला एवं से आशा को अर्थमंत्री पूरण करिसेंती, कारण गतकाली ठारू संकेत देइथिले जे मु मिडिल क्लास फैमिली रु आसीछि. भवानी, तो या पूर्व प्रधानमंत्री कहते जे मध्यवर्ती निकटतर हुआ केन्द्र मंत्री मानक ए परामर्श देउतले, वार्ता देउतले बा ए मेसेज मध्य स्पष्ट भाव में सूचना दौला जे मध्यवित्तों किसी गोटे बड़ घोषणा करा जाई पारे एथर बजेट रे. अर्थात आयकर दर्शक बंधु आपण सीधा सड़क देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट पेड़ी खोली सबुथिरे गुरुत्व दि जाइछि, किंतु सबुठु बड़ परिवर्तन आपण देखुचंती आयकर सीमा बदली जाइछि. समस्तंकर अपेक्षा मध्य थिला, किंतु एई बजेट किछि अलगा संकेत देला. 7 लाख जाए सीधा सड़क छाड़ मध्य करा जाइछि. आयकर स्लैब सीमा रही 5 लाख रु 7 लाख को वृद्धि करा जाइछि. आगुरु 5 लाख थिला, एबे 7 लाख को वृद्धि करा जाइछि एवं एहा गोटे बड़ परिवर्तन आमे कहि परिबा. 7 लाख जाए आपण मानकु देबाकू पड़िबो नाही टैक्स. 3 लाख जाए वार्षिक आय पई पूरा शून्य रही एवं नुआ आयकर स्लैब मध्य परिवर्तन किपरि करा जाइछि एवं आसीछि. आपण मान देखुचंती 6 रु 9 लाख पर्यंत 10% एवं 9 रु 12 लाख पर्यंत 15% एवं 12 रु 15 लाख पर्यंत 20%. ये होछि आपण देखुचंती आयकर सीमा मध्य किपरि बदलिछि. 7 लाख जाए आयकर छाड़ मध्य करा जाइछि एवं 7 लाख जाए आपण मानकु देबाकू पड़िबो नाही टैक्स. ये गोटे बड़ परिवर्तन आपण देखुचंते आयकर स्लैब रे. ये परिवर्तन समस्त अपेक्षा रहितला, कहीं आपण लगातार भाव में सही विजुअल देखाउछु. 9 लाख रे आपण 5% एवं आयकर स्लैब सीमा 5 लाख रु 7 लाख को वृद्धि पाइछि. 3 लाख जाए देबाकू पड़िबो नाही टैक्स, जहाँ सूचना मध्य देउथिले निर्मला सीतारमण. 3 लाख रु 6 लाख पर्यंत 5% एवं 6 रु 9 लाख जाए 10% एवं 9 रु 12 लाख जाए
15% आपको देवाक पड़ो 12 ରୁ 15 लाख जाए 20% ये हूँ गोटे बड़ परिवर्तन आप देखुं नुआ आयकर सीमा आसी बदली ये 7 लाख जाए आयकर छाड़ भी करा किंतु अपरपटे आप देखिए पूरा बजेट को देखिए तेरे बजेट रे अनेक किछि परिवर्तन होइछि किंतु बजेट रो 7टी स्तंभ उपर जदि आमे आलोचना करिबा तेबे सामग्रिक विकास पछुआ वर्ग महिला दिव्यांग विकास को लेकिन मध्य घोषणा करा जाइछि अनेक योजना एवं द्वितीय रे सबुज विकास कथा कुआ जाइछि तृतीय रे युवशक्ति कथा कुआ जाइछि चतुर्थ रे बजेट देशर शेष व्यक्ति जाए पहुँचब एवं पंचम रे आर्थिक क्षेत्र को मध्य प्राधान्य दिया जाइछि एवं षष्ठ कथा देखा भित्तिभूमि और पुंजी निवेश उपर गुरुत्व दि जाइछि एवं जति सप्तम कथा देखा तेज क्षमता विकास कथा गुरुत्व दि जाइछि ये हूँ बजेट्र 7टी स्तंभ उपर आम आपको देखाऊँ सामग्रिक विकास टू आरंभ करके आपण क्षमता विकास कथा देखंतु पूरा सबु क्षेत्र को ये बजेट छुईची किंतु आमे जदि गोटी गोटी करी आलोचना करिबा किंतु सबुठु बड़ डेवलपमेंट आमे तो लगातार भावे आपनको देखाउछु ये जो आयकर स्लैब प्लान पूरा बदलई जाइछि एवं नुआ आसीछि 3 लाख पर्यंत आपण मानकू आयकर जो टैक्स दबा को पड़ुथला आगुरु एबे किंतु शून्य रहिछि एवं 6 ରୁ 9 लाख पई आयकर रहिछि 10% एवं 9 ରୁ 12 लाख पई आयकर 15% रहिछि लगातार भावे आमे आपनको एई बड़ परिवर्तन रे चित्र आमे आपको देखाऊँ आम आलोचना करवा आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक रवि दास श्रीयुक्त दास आपण को आलोचना को स्वागत श्रीयुक्त दास समस्त अपेक्षा थिला कौन परिवर्तन होउछि किंतु पूरा सामरिक विकास टू आरंभ कर क्षमता विकास सबु क्षेत्र को प्राधान्य दि जाइछि किंतु बड़ परिवर्तन गोटे आयकर स्लैब बदली जाइछि एवं पाखापाखि 5 लाख ରୁ 7 लाख को वृद्धि करा जाइछि ए परिवर्तन को आपण केमती देखुछंती नहीं देखु 5 लाख 7 लाख को नुह आप देखु जो रिलीफ दि जाइए मु भावुची मध्यम वर्ग विशेष संतुष्ट हेबे नहीं से माने देखंतु से 8 लाख ରୁ 3 लाख को गला 3 लाख ऊपर पड़ला टिकस आसिला आ 3 लाख ରୁ 9 लाख पर्यंत 5% बढ़े बढ़े गले एवं पुणी जो परिवार जाइए जो स्लैब को 5 स्लैब कले सत से मध्यवित्त श्रेणी विशेष खुशी हे सीधा चाहते 5 लाख 6 लाख पर्यंत कौन से टिकस न पड़ू से तो है ना तापर भी से स्लैब परिवर्तन चाहते एवं जो माने सैलरी क्लास आज से सैलरी क्लास 20 लाख तार 30% हो जाऊँ पूरा ऊपर चली जाऊँगा टिके परिवर्तन आवश्यकता थिला कारण यही सेलटा सेविंग करेंगे सेविंग कले विनियोग हम पुनर्बार किंतु ये चित्र हमें आपको लगातार भाबे देखाउ छु केमती स्टेट वाइज एलोकेशन कोन अछि सेटा जनैले नै किंतु रेलवे बजट आल्सो मैक्सिमम एलोकेशन दे हैव मेड दैट विल हेल्प फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रे आल्सो दे हैव गिवन सफिशिएंट एम्फासिस देचन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रे स्किल डेवलपमेंट एंड यूथ स्कूल करवा लगी डिफरेंट जगह रे इंफ्रास्ट्रक्चर रे डिफरेंट एयरपोर्ट्स करवा लगी प्रोविजन रखा जाइछि तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रे एग्रीकल्चर सेक्टर रे आपनकर इवन श्रिम्प एक्सपोर्ट क्षेत्र रे एवं जोटा हमें आंटीसिपेट करथिले जे स्क्रैप इंपोर्ट कले ता देरे जो जीरो ड्यूटी रखिथिले सेटा कंटिन्यू करियो बोली से अनाउंस कले जोटा गोटे इंडस्ट्री मान बहुत भल शुभकारक जिनस एवं जो बड़ इंडस्ट्री लगी जो रॉ मटेरियल प्राधान्य दिखाई जो इंपोर्ट आम एक्सपेक्ट करूँ जे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स रे इंपोर्ट ड्यूटी कम हम से इंपोर्ट ड्यूटी कम करछंती केवल तादरे आम देखा कथा जो लिस्ट कर इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ कहाँ ऊपर कम करछंती इट शुड नॉट बी आल्सो ए डंपिंग यार्ड जोटा आमर पुणी डेफिसिट टाको बढ़ाईदेव जो ट्रेड डेफिसिट रही कारण आम आज इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वर्ल्ड रिसेशन आमर एक्सपोर्ट कम होची इंपोर्ट बेसी होची किंतु इंपोर्ट कमिबा लगी जो प्रोविजन रखिछन्ती बायोगैस सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी तापर मते ध्यान रखा जाइछि ताको संपूर्ण भाव अनुधान कर जना पड़िबो जे को सेक्टर रे केते बेनिफिट मिलिछि किंतु ओवरऑल आपण जो देखिबे असेस करिवे दिस इज ए गुड बजेट
समय परिप्रेक्षी ये जो ग्लोबल रिसेशन वार सिचुएशन तादे जो बजेट करा सीनियर सिटीजन मान ध्यान दि जाइए डायरेक्ट टैक्स भी एनहांस करा जो टैक्स फ्री जोन टाक एनहांस करा प्लस डिफरेंट हेल्थ को एजुकेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर को रेलवे को सब प्रति ध्यान दि जाइए एवं मु भावुची वर्तमान सिचुएशन रे वर्ल्ड जमती ग्लोबल रिसेशन चली ताकू देखिले कंपैरेटिवली भारत जो बजेट प्रेजेंटेशन करछंती ये गोटे भल बजेट डेफिनेटली तो प्रभावित करिवो एनकरेज करिवो नहीं कस्टम रेट टेक्सटाइल रे आपण इंपोर्ट कर ना एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट टेक्सटाइल आम करिया दरकार ना डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जी अच्छी कि तादे आम एक्सपोर्ट करें टेक्सटाइल तेणु टेक्सटाइल आम इंपोर्ट बहुत कम हुए आम एक्सपोर्ट बेसी हुए तेणु इंपोर्ट ड्यूटी तादे कम कले कौन असुविधा हम आमर बांग्लादेश रु वियतनाम रु ये सब जो मैंने आसिक आम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अफेक्टेड सो तादे न कमाईटा इट इज ए गुड थिंग फॉर आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कारण से आज इट इज एडवांटेज पाँच यूरोपियन यूनियन बांग्लादेश को आ वियतनाम को से फ्री कर देर इज नो इंपोर्ट टैक्स आम यदि इंपोर्ट टैक्स कमेदबा ताले आम डोमेस्टिक टेक्सटाइल सेक्टर विल बी अफेक्टेड आम डोमेस्टिक डिमांड बहुत अधिका अच्छी आमर जो अधिका अच्छी ताको मीट करके आम एक्सपोर्ट करुचे बट फूड ग्रेन रे जो जो क्षेत्र में एथरे कौन प्राधान्य दिखाई आम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर डोमेस्टिक प्लेयर मान प्रोटेक्शन दवा लगी वर्ल्ड डिसीजन समय जमी से अफेक्टेड न हे तेणु डोमेस्टिक जो आम टेक्सटाइल कम करना गोटे गुड डिसीजन ओवरऑल मु देवी मार्क 8 मार्क देवी आउट ऑफ 10 भल बालांस बजेट यही समय देखिए या आम टे प्राग्मेटिक हवा दरकार आम यदि कह सब आम भल पपुलर बजेट हो पपुलर बजेट आम अवस्था पुणी पाकिस्तान आ श्रीलंका भाया हो तेणु आमको आम जो अच्छे इंडस्ट्री निजे चलाऊे एंटरप्रेन्योर मान सब अच्छु सब दृष्टि देखिए गोटे पपुलर बजेट यहाँ किसी अनपपुलर बजेट भी नुह कि बहुत पपुलर बजेट भी नुह से कहते सिम्प्लीफाई करेंगे बोली इंस्ट्रक्शन अच्छी सेपरेट कमिशन रखुन जो मैंने रिटर्न फाइल कर इमिडिएटली केमती हम रिलीफ मिल से सेपरेट ऑफिसर्स मान अपॉइंटमेंट करेंगे तेणु आप सब दृष्टि देखिए गोटे बजेटा को सब दृष्टि देखिए देशर उन्नति लगी एवं तादे प्रोटेक्शन दवा लगी आमर जो वर्ल्ड ग्लोबल रिसेशन इंपैक्ट एवं आम मैन्युफैक्चरर यूनिट की जो जीडीपी ग्रोथ आमर 17% हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रू बर्तमान जो देते रिलीफ ऑन द इंपोर्ट ऑफ दिस मटेरियल जो दिगला इंपोर्ट ड्यूटी कमी दिखाई फल ये गोटे एनकरेज कर फॉर आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड तेणु आम वर्ल्ड रिसेशन हेले भी तार इंपैक्ट इंडिया रे बहुत कम पड़ो हेल्थ कोविड लगी हेल्थ सेक्टर प्रोविजन रखिंट एजुकेशन सिस्टम जो यूथ आम कंट्री मैक्सिमम अच्छा यूथ सेक्टर को केमी स्किल करा डिफरेंट ट्राइबल पिला केमी स्किल करा सब दृष्टि गोटे कंप्लीट भल बजेट डोमेस्टिक गैस यूज से इन्फ्लेशन को केयर नबा लगे से जो डायरेक्ट टैक्स अच्छी से लेवल टा बढ़े से जो तार डिफरेंट लेवल जो थिला ताको बढ़े 5 लाख ରୁ 7 लाख कर 2.5 की 3 कर से आज इट इज गवर्नमेंट इज गिविंग ए बेनिफिट ऑफ अराउंड 38,000 करोड़ टू टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन तेणु पूर्ण ये आसला पर बजेट तार जो टोटाल एनालिसिस आम जाना केते आलोकेशन कोटी होता देखला बट वर्तमान ओवरऑल व्यू जदि आप देखिए इट गिव्स मी पर्सनली सैटिस्फैक्शन दैट इज ए बैलेंस बजेट एमएसएमई सेक्टर रे जो आम आशा रखी जे कोलैटरल फ्री करवा लगी से गोटे प्रोविजन कर 9,000 करोड़ गोटे फास्ट टाइम प्रोविजन कर आगुरी 2 करोड़ पर्यंत
कौन सी कोलाटेरल दबाक पड़ो ना ताकू रिटर्न कर प्लस ता सांगे एडिशन कर 9,000 करोड़ गोटे प्रोविजन रखिंट गोटे फंड रो जो गवर्नमेंट विल स्टैंड गारंटी से रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट शुड स्टैंड गारंटी फॉर द एमएसएमई सेक्टर एटलिस्ट टू गेट द लोन जार कोलाटेरल नहीं तो सेटा गोटे स्टार्टअप माला को एवं एमएसएमई सेक्टर को सेटा भी गोटे प्रोत्साहन से एम्प्लॉयमेंट लगे जो प्रोजेक्ट दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत एम्फासिस देइछंती रेलवे जो डेवलपमेंट करियो कहते जो पोर्ट करियो बोली 50 टी पोर्ट डिफरेंट जगह हबो बोली कहते एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रे जो एनकरेजमेंट देइछंती तादरे ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हबो हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रेलवे ये सब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेबो जो नुआ भितर बहुत सरलीकरण करुँच प्रक्रिया सरलीकरण करुँच गोटे कमन जी लिख जार रिटर्न फाइल कर जापर एक्जाक्टली कौन बर्तमान कौन आप चार्टेड अकाउंट पाक नगले आप जापर केमी फिलअप करेंगे रिटर्न रिटर्न फाइल कर सरलीकरण करेंगे से आनाउंस कले आज तेणु पुराना पद्धति आम तो कही रेशनलाइज करने लगी आम जो टैक्स कंपोनेंट इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस दे हैव गिवन द आम जो एक्सपेक्ट करते बिफोर द बजेट आम कही इंश्योरेंस बर्तमान बहुत बढ़ी जाइए तेणु से 80D प्रोविजन टा जदि क्लीयरली मेंशन कले नहीं कि कहले जो इंश्योरेंस बढ़ी तार इंपैक्ट जो पड़ू लोक भर बिकज ऑफ द कोविड दे हैव आल्सो गिवन एम्फासिस टू दैट ओडिशा लगी स्पेशल पैकेज आपन जदि कहबे मते पचारिबे जदियो आमे सदा बेले कहूछु स्पेशल कोटा हमर दरकार किंतु आमर बजेट इज ए सरप्लस बजेट ओडिशार बजेट जो स्टेट रा बजेट सरप्लस बजेट होउची सेठी यदि आमे कहबा स्पेशल कोटा हमकु दिया जाओ मु भाबुची सेटा जस्टिफाई न होई पारे मे बी पॉलिटिकल लोक माने कहि पारंती बट जदि आपण देखिबे फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जदि स्टेट रा बजेट इज सरप्लस आमर बहुत टंका आसुची आमे खर्च भी करि पारुने से समय आमे स्पेशल पैकेज मागिबाटा सब स्टेट बर्तमान मागुछन स्पेशल पैकेज दिया जाओ इवन आमर जो देखिए जो लास्ट माइक्रो इरिगेशन बिकज प्रोब्लेम अच्छी वाटर प्रोब्लेम अच्छी जदि वाटर प्रोब्लेम अच्छी से वाटर प्रोब्लेम ओडिशा रे बर्तमान सुधा देखा देनी तेणु ओडिशा रे आमर से जो इरिगेशन बिकज एग्रीकल्चर को प्राधान्य दिया जाइए एग्रीकल्चर जो इरिगेशन न कर पारे एग्रीकल्चर आम हो बर्तमान आम भल अनाउंसमेंट कले आम बर्तमान सबुठ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो फूड आइटम्स वी आर द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तार तो आम बर्तमान खाद्य आम डिपेंड करूँ क्या पृथ्वी में आम एक्सपोर्ट करुचु मिलेट को गुरुत्व दि जाइए एग्रीकल्चर सेक्टर रे जो स्टोरेज करने लगी फार्मर मान को एनकरेज कराई गोटे कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कनसेप्ट अना जो टू टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम चैलेंजेस ऑफ द फार्मर्स तेणु से बहुत गुड फैसिलिटी से अनाउंस करें पुंखानुपुंख न देखा सेमती स्टेटमेंट देदे करेक्ट स्टेटमेंट हम ना किंतु मत जहाँ लगुच बजेट गोटे बालांस बजेट एभली परिस्थिति जो थे इनश्योर कर ग्रोथ अल्सो चलो जो ग्रोथ आम चली बर्तमान वर्ल्ड हूँ सब बेस्ट बिकज ऑफ द कोविड बिकज ऑफ द रशियन वार जो प्रकार सिचुएशन बर्तमान वर्ल्ड अनेक देश मैंने फेस कर तुलन में लकीली आम इंडिया ग्रोथ इज द हाइस्ट इन द टोटल वर्ल्ड रे तेणु से केमी सस्टेन करवा से ग्रोथ को प्लस ता सांगे आम के बेनिफिट दे पार टू आवर पीपल ताकू मिसेकी जोड़ी को मत लगुच गोटे बहुत बालांस बजेट है आज्ञा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने लगी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी ऊपर जो इंपैक्ट पड़ो दैट ऑल्सो से इन्फ्लेशन कंट्रोल हम आप जोड़ा जनरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन्फ्लुएंस करता है प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राधान्य दि जाइए एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जोड़ा प्राधान्य दि जाइए तादे ऑटोमेटिकली आप लॉजिस्टिक कॉस्ट कमिज लॉजिस्टिक कॉस्ट जब कमिला ताल ऑटोमेटिकली आप टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड तेणु इन्फ्लेशन टाक कंट्रोल करने लगी से प्राधान्य देते किसी वृद्धि देखे ना बर्तमान तेणु मत लगुच गोटे एक्चुअल बालांस बजेट बहुत पॉपुलिस्ट बजेट नुह प्लस बहुत खराब बजेट नुह कारण यही सिनेरियो रे
आप देखिए आम पड़ोसी राज्य मैंने जो श्रीलंका पाकिस्तान जो भाई अवस्था अच्छे जो डिप्लीट करुच्ची कम्प्लीट फॉरेन करेन्सी आमर एबे भी चलती ट्रेड डिफिसिट एबे भी अच्छी 300 बिलियन आमर इंपोर्ट होची बट 100 सम बिलियन ओनली एक्सपोर्ट होची बिकॉज वर्ल्ड रो मार्केट वर्तमान नहीं ता भितर केमिति सस्टेन करबा बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक मार्केट ता प्रति प्राधान्य दिया जाइछि कारण डोमेस्टिक डिमांड हम इंडिया रे बहुत अधिक है बिकॉज पॉपुलेशन इज बहुत अधिक है हमर तेणु तादेर सब प्रकार जोड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लगी रिसर्च लगी प्रोविजन रखा जाइछि पीपीपी मोड रे बहुत गुड़िए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करबा लगी मध्ये से प्रोविजन रखचंती एमएसएमई की एनकरेज करबा लगी जोड़ा रखचंती गवर्नमेंट गारंटी स्कीम सेटा प्रॉपर भाव इम्प्लीमेंट करेंगे ताल सेटा गोटे एनकरेजमेंट फॉर द एमएसएमई सेक्टर बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हेले एमएसएमई सेक्टर आल्सो विल बी बेनिफिटेड सोनार उपर टैक्स बढ़िले भल तादेह कारण आमर देश में सोना रूपा रखा लोकों संख्या बहुत कम तेणु प्राधान्य दी जाइए कॉमन मैन तार सोना किणवा केवल बाहागर समय किणती ना अदरवाइज कौन सोना किणिक आनी घर रखा तेणु तापर टैक्सटा बढ़ेले जो मैंने सोना किणवा लगे पैसा अच्छी से टैक्स देले तो भल कथा से मुझे भाव भल चाउल किणवे टैक्स लगवा सोना जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम जोटा कर प्राधान्य दिखाई एटलिस्ट गरीब लोक कि भोकरे मरवे डेफिनेटली मिडिल क्लास फोकस कराई मिडिल क्लास जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट पाइबे मिडिल क्लास पिला एजुकेशन पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट खोल ट्राइबल मान डिफरेंट स्कूल्स कराई स्किल सेंटर कराई तो सबुड़ मिडिल क्लास और एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मिंग सेक्टर को प्राधान्य दि जाइए एक्सपोर्ट ऑफ आमर होटेल एंड टूरिज्म की प्राधान्य दिखाई होटेल एंड टूरिज्म 50टा डेस्टिनेशन कर 50 डेस्टिनेशन सिटीज तादेह प्राधान्य दिखाई जो डिस्ट्रिक्ट इच डिस्ट्रिक्ट गोटे गोटे आइटम लगे आइडेंटिफाई करने लगे स्कोप रखाई तेणु आप देखिए यदि पूरा इट इज ए होलिस्टिक व्यू एबाउट टोटल कंट्रीज ग्रोथ आपण समस्त लॉन्च करके बहुत जगह जीवार अच्छी दर्शक बंधु आपण सीधा सड़क प्रतिक्रिया मुझे शुणुले एक्सपर्ट मान एक बैलेंस बजेट समस्त को सुहाइला भली बजेट आसी जहाँकि शुभंकर और 10 आउट ऑफ 8 एक्सपर्ट माने आप सीधा सड़क प्रतिक्रिया शुणुले किंतु अपरपटे ये जो स्वदेशी मोबाइल कथा कहतु इलेक्ट्रिक जान कथा कहतु कैमेरा लेंस खेलना साइकेल आदि सस्ता हेबो एवं अपरपटे स्वदेशी किचन चिमनी सुना रूपा प्लाटिनम इंपोर्टेड डोर मध्य महंगा हेबो किंतु दर्शक बंधु जदि ओवरऑल आमे कहिबा तेबे ये जो बजेट जो आसी आमे तो कहि परिबा गोटे बैलेंस बजेट आसी किंतु कृषि क्षेत्र जदि कहिबा चाषी समस्या समाधान हेबो कृषि क्षेत्र रे स्टार्टअप को गुरुत्व मिली ग्रीन ग्रोथ सरकार मूल लक्ष्य रही 20 लाख कोटी कृषि ऋण फंड भी एवं मत्स्यजीवी स्वतंत्र पैकेज भी घोषणा करा जाइछि भारतीय मिलेट संस्थान गठन हेबो रेलवे एवं ट्रांसपोर्ट कथा जदि आमे आलोचना करिबा तबे रेलवे पाई 2,40,000 लाख कोटी बजेट मध्य घोषणा करा जाइछि रेलवे रे नुआ योजना पाई 75,000 कोटी मध्य घोषणा करा जाइछि 50 नुआ विमान बंदर हेबो अधिक एयर स्ट्रिप हेलीपैड भी निर्माण हेबो अर्बन इंफ्रा पाई प्रति वर्ष 10,000 कोटी घोषणा करा जाइछि ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पाई 75,000 कोटी किंतु आपण मान जदि बजेट को देखिबे तबे एथरा बजेट रे 7टी स्तंभ ऊपर जदि आपण आलोचना करिवे सामरिक विकास पछुआ वर्ग महिला दिव्यांग को विकास एथरे जाउछि सबुज विकास युवशक्ति बजेट देशर शेष व्यक्ति जाए पहुँचब आर्थिक क्षेत्र भित्तिभूमि और पुंजी निवेश क्षमता विकास ये 7टी स्तंभ पर गुरुत्व दि जाइछि किंतु कौन सस्ता हेबो साइकेल ऑटोमोबाइल किछि मोबाइल कैमेरा लेंस सस्ता हेबो सीमा शुल्क मध्य 13% को कमिछि आ वर्षे जाए मागणा अन्न योजना एवं समाज सबु वर्ग को गुरुत्व मध्य दि जाइछि 28 मास जाए 80 कोटी लोकों को मागणा राशन भी दियाजिबो पीएम सुरक्षा योजना रे लाभ पाउछंती 44 कोटी 2014 पर प्रति व्यक्तिर मुंड पिछा आय 2 गुणा होइछि 47.8 कोटी लोकों पाखरे जनधन अकाउंट
रही एवं मागणा राशन पाई 2 लाख कोटी अधिक बजेट मध्य करा जायछि। मूल लक्ष्य होछि केही भी जेमती भोकिला न सोइबे काहेकि ना गरीब लोक मानको अधिक फोकस भी दिया जायछि बजेट रे। अपरपटे कोरोना जोगु विश्व अर्थनीतिर गति भी कमिछि। महामारी परे देशर अर्थनीति को आगु को नेबाकू काम मध्य होइछि। सबका साथ सबका प्रयास रे काम होइछि। सठिक दिशा रे भारतर अर्थनीति जहाँ मध्य घोषणा करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं विकास पथरे भारतीय अर्थनीति विश्व रे मांदावस्था भारत रे स्थिति मजबूत एते मांदावस्था सत्वे भारत रे 7% अभिवृद्धि भी रही एवं 2047 सुधा देशरू रक्तहीनता दूर लक्ष्य भी रही। पीएम आवास योजना पाई खर्च 66% वृद्धि मध्य पाइछि। पीएम आवास योजना रे खर्च हेबो 70,000 कोटी एवं एकलव्य स्कूल पाई 38,800 शिक्षक बढ़ा जिवो। इन्फ्रारे खर्च 33% बढ़ी 10 लाख कोटी हेबाकू मध्य घोषणा करा जायछि। आलोचना करिबा आम सहित सीधासलख जोड़ी होउछंती आम प्रतिनिधि स्वाति जेना। स्वाति समस्तंकर तो अपेक्षा थिला कौन वर्तमान ये बजेट आसुछि बजेट आसीगला किंतु ये गोटे एक्सपर्ट मान प्रतिक्रिया शुणुलु बैलेंस बजेट बोली कहउछंती काहेकि ना अनेक दिगो को मध्य विचार को निया जायछि सब दिगो को प्राधान्य दिया जायछि। स्वाति जदि आप शुणी पारुछंती तेबे आमे एक्सपर्ट मानकर टिके पूर्व प्रतिक्रिया शुणुलु एवं समस्ते ये बजेट को 10 आउट ऑफ 8 मध्य देइछंती गोटे बैलेंस बजेट मध्य होइछि। डेफिनेटली देखंतु जदि बजेट को देखिबा तो आगामी वर्ष रही निर्वाचन रही तो निर्वाचन पूर्वर बजेटा निश्चित रूप से लोकाभिमुखी होता माने लोकों भितर जो रही कि किभली भाव में सुहाउची तो सबुठारु बड़ रही कथा कहबा चाकरिया हुंतु सेमानक पई जो भाव में आय टैक्स कथा कह जाउची तो ताकू जतबेले वृद्धि करा जायछि 5 लाख रु 7 लाख तो निश्चित रूप से गोटे बड़ माने आश्वस्ति मिली। आम सीधा सड़क आलोचना करबा आम सहित रही चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएल शर्मा रही। सर स्वागत करुच्ची आपनको केमती आपण देखुचंती पूरा बजेट को जदि हमें संक्षेप आलोचना वर्तमान जो वर्ल्ड रो इकोनॉमिक सिनारियो अछि याठू भलो बजेट हमें एक्सेप्ट करिया कथा नुह अल्दो बेंग एन इंडियन पीपल हमें देखुतलु कि एटा इलेक्शन ईयर एंड लास्ट नेक्स्ट इलेक्शन पूर्व एटा गोटे फुल बजेट आछि तो इट शुड बी पॉपुलिस्ट किंतु ये जो बजेट अछि एटा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान रे रखिकी वर्ल्ड इकोनॉमी को ध्यान रे रखिकी करा जायछि। ठीक अच्छी लास्ट केते वर्ष होगलानी मिडिल क्लास मानक किसी प्राधान्य दिया ए बजेट रे मिडिल क्लास मानक ऊपर फोकस कराई प्लस ओवरऑल देखा गले यहाँ हूँ बहुत बैलेंस बजेट। आई एम हैप्पी विथ दिस बजेट। डेफिनेटली केते पॉइंट देबे जदि देखिबा मो डेफिनेटली 8 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 त माने 8 आउट ऑफ 10 माने 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 फुल गोटे सैटिस्फैक्टरी आसुची या टू बेटर बजेट आम एक्सपेक्ट करि परिबाने। आपण देखंतु पाकिस्तान श्रीलंका कोन अवस्था अछि वर्ल्ड वाइज रिसेशन समस्ते फोरकास्ट कर इंडिया रो इकोनॉमी आज का डेट रे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आगो जाउची एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सर ये गोटे बड़ कथा कहले कि मिडिल क्लास को पाई आमे बहुत टाइम देखू जो माने चासी गरीब श्रेणी लोक आउ किछ टाइम रे आमे कहू कि जो माने बिलियनर रहले कि इंडस्ट्रियलिस्ट से मानक पाई मिडिल क्लास जो माने चाकरिया से मानक क्षेत्र रे कोन सहायक ताको पाई जो टैक्स स्लैब बढ़ा जाईची प्लस एना डिटेल फाइनेंस बिल आसले जना पड़ो से बहुत फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करिसंती फॉर सर्टेन रिलीफ एंड कंसेशन सेटा डिटेल फाइनेंस बिल आसले कहि पारि किंतु ओवरऑल देखा गले गत 4-5 पहिले वर्तमान इस स्लैबटा दुईटी प्रजार गोटे नुआ रहउची पुराना रहउची कोन डिफरेंशिएट रहइबो केते बेनिफिट हबो लोक को केते रिलैक्स रहइबो नहीं देखा गले पुराना रिजिम जदि आपण कहबे पुराना रिजिम रे आपण बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अछि सेटा आपण इन्वेस्टमेंट को ये करिवे से करिवे करके देखिबे नुआ जो रिजिम अछि नुआ रिजिम रे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपण चार्टर्ड अकाउंटेंट के एडवोकेट पाखे जिबा दरकार नै आपण निजे निजे टैब रे फाइल कर दे परिबे। हमें कहि परिबा अप्रोक्सीमेटली 60-65,000 जो माने पर मंथ कमाउचंती तांको आउ ता भितरे फसिया को पड़ो तांको आउ टैक्स दाउ पड़बोनी अप टू 7 लाख। सर ये जो एटारे बेनिफिट जदि हमें देखिबा ओवरऑली पब्लिक को जे केमती रहइबो
गवर्नमेंट सेक्टर भी कारण जिते आम सेविंग करूँ टैक्स फाइल करूँ टीडीएस फाइल करूँ ये सब जिनस भी थाए आर कौन डिफरेन्सीएट रमती भाव में क्या एक्चुअली ये जो एना जो नुआ पीढ़ी आसचंती जो जॉब सेक्टर रे माने एंड स्पेशली आफ्टर दिस कोविड लोकंकर सेविंग मेंटालिटी आउ नहीं दे वांट टू लिव लाइफ आगर कौन कि सेविंग करके आम टैक्स बचाऊलु किंतु से माने ना देखुं जेहेतु गवर्नमेंट सबुथ फैसिलिटी कलानी आमको मेडिकल फ्री हो गलानी ये सब जो जिन गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग नाउ तेणु सेविंग मेंटालिटीटा जो आगुरी थिला आम बापा माँ समय कि नहीं सेविंग करके रखा काली को देह भल हम खराब हम ये हम से हम से मेंटालिटी बर्तमान ना तेणु लोक चाहते जहाँ इनकम कर एंजॉय करने तेणु नुआ टैक्स रिजिम कराई ऑप्शन जो मैंने चाहिए कारण किसी जो कथा जदि आपण जो था हेल्थ सेक्टर जदि आम कहीपर कि बीएसकेवाई अच्छी आउ जो भी रही कि प्रधानमंत्री योजना जमती भाव से बेनिफिट पाँच किंतु यह सहित भी किसी लोग मेडिकल इंश्योरेंस कर लाइफ इंश्योरेंस एवं भी कर तो ऑप्शन बर्तमान रहा कौन देखो मैडम गवर्नमेंट धीरे धीरे से वेस्टर्न कल्चर आड़ को जाऊँगी आप जी यूएस जी यूरोप जी से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी लोक मान गवर्नमेंट मुहैया कराऊँगी बर्तमान आम जो प्रधानमंत्री स्कीम अच्छी कि आमर बिजु जो योजना अच्छी से किसी लिमिट अच्छी अमाउंट लिमिट अच्छी जो क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल लिमिट अच्छी तेणु धीरे धीरे यहाँ भी अपग्रेडेशन हो तेणु आग को जाकि भावुँ जेहेतु आम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सारूँ आउ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हवा को जाऊँ तेणु वी शुड एक्सपेक्ट कि आवर लाइफ रो क्वालिटी से हिसाब से बढ़ आउट गोटे बड़ कथा रोचे सेगमेंट यूथ सेगमेंट से कौन थर बजेट नुआ जिनस रमती निजक अपग्रेड करेंगे बाय एजुकेशन हो कि एम्प्लॉयमेंट हो ये बजेट भी अनाउंस कराई फॉर डिफरेंट स्कूल ये जो दक्षता केन्द्र एगुड़ा सब जो आज फाइनेंस मिनिस्टर कर डेफिनेटली यूथ मानकर एम्पावरमेंट हम बजेट यह सहित भी आम देखु वोमेन सेक्टर ताऊपर सबु समय प्रधानमंत्री हूँ कि ओडिशार कथा जदि कहबा मुख्यमंत्री भी फोकस कर बजेट एथरक जो महिला सम्मान गोटे योजना अनाउंस कर तो दैट इज ए ब्यूटीफुल स्टेप महिला माने निजर जो सेविंग्स को से अकाउंट रखिपारे से अमाउंट को कहीं भी टच कर पारे माने माने नोबडी कैन टच दैट अमाउंट अनलेस एंड अंटिल आपण जदि चाहिए आउ से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे भल देवे तो दैट इज वन थिंग आउ महिला मान बहुत गुटे प्रोविजन अच्छी ग्रोथ हम कि ना कारण आम देखु कोरोना पर बहुत लोकंर स्टैंडर्ड कमी तो से हिसाब से खास कर मिडिल क्लास कथा जब आम कहीपर तो माने फाइनेंशियल ग्रोथ केमती रह मैडम IMF रिपोर्ट कहूँ कि पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर कि इंडियन इकोनॉमी इज ए ब्राइट स्टार सबुआड़े देखा जाऊँगी कि रिसेसन आसक जाऊँगी बट इंडिया ता गोटे बात पड़ी इंडिया रे कौन सी रिसेसन खतरा नहीं एंड इंडिया इज मूविंग वेरी फास्ट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो आईटी सेक्टर खास कर रिसेसन कथा आम उठाऊ सी भी गोटे बड़ फैक्ट रोचे आम विगत दिन में देखीचु भी आम यूएसए कथा कहतु जो जो सिचुएसन देखिए गति कर बहुत युवपीढ़ी जो मैंने चाकरी क्षेत्र में ताकू नहीं बर्तमान कौन रही मत लगुनि कि इंडिया किसी रिसेसन किसी भी इफेक्ट आसो वी शुड बी वेरी एश्योर कि क्या आम बहुत स्ट्रांग पोजिशन अच्छे जदि देखा डेफिनेटली स्ट्रांग पोजिशन रहीचु किंतु क्रमागत भाव में आम देखु डॉलर हिसाब से जो टंकार रेट कमुची जोटा ताहा मध्य कोटना कोठी गोटे अफेक्ट करिवो कि आम कहि परिबा लोक मैडम आम देखुछु आबर इंडिया पर्सपेक्टिव रो आपण जदि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव रो देखिबे आमर जो डॉलर रेट बढ़ुची सेटा अन्य कंट्री अपेक्षा यथेष्ट कम अच्छी अल्दो आपण ठीक कहले डॉलर एते बढ़ी जाटा आमको डेफिनेटली अफेक्ट करुचे तेणु से तो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहले कि से एनकरेज करुँच कि आप बुलिया जाऊँच इंडिया रे जातु इंडिया रे डिफरेंट टूरिस्ट लोकेशन को से बहुत वर्ल्ड स्टैंडर्ड करा तेणु आज ए कॉमन मैन आपण हूँ मुझे डॉलर बढ़ले आमर किसी फर्क पड़ूनी सेटा ठीक अच्छे जो कंपनी मैंने इंपोर्ट करुँच तेणु से इंपोर्ट को भी प्राधान्य दिखाई इंपोर्ट रे केते रिडक्शन करा जाइए सब करा जाइए तेणु अफेक्ट पड़ूनी किंतु जितेबाला तैल दर बढ़ुची गैस दर बढ़ुची सुना दर बढ़ुची ये कॉमन पीपुलर काम माने कॉमन पीपुल से माने अटैच्ड रहउछन तो ताकू तो इनडायरेक्ट अफेक्ट पड़ुची मैडम देखो से तो आम ग्रीन एनर्जी आड़ को जाऊँ है ना
बिकज आम पाखे तेलर रिजर्व ना आम डिपेंडेंट अच्छु बाहर कंट्री उपर आज जो ये बजेट भी जिते प्रोविजन करा जाइए फॉर ग्रीन एनर्जी ये सब जिनस यहाँ जो आसव स्वाति टिके पचारंतु कृषि क्षेत्र कथा कहीं कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बेसी गुरुत्व दिया जाइछि मिलेट भारतीय मिलेट संस्थान भी गठन करा जिवो एहा को केमती देखुचंती कृषि क्षेत्र को भी बहुत प्राधान्य दिया जाइछि गवर्नमेंट आगे देखा चाष को गोटे एग्रिकल्चर जेहेतु गोटे बड़ पार्ट रोचे बर्तमान मिलेट मिशन ताकू गोटे नुआ माने दिग्दर्शन दि जाऊँ जो पदक्षेप नहीं ये गोटे से सेक्टर मान जोटा केमती मु धन्यवाद देवी आम केंद्र सरकार को ये जो मिलेट आगु आप देखिए आमर जो ओल्ड पीढ़ी से माने यही मिलेट उपर डिपेंड करुले या भल न्यूट्रिएंट आउ नहीं सेटा दबी जाइए बिकज ऑफ आम टे वेस्टर्नाइज हो एना से पुराना कल्चरटा को आना जाऊँगी मिलेट्र भैल्यू बुझा जाऊँचे फॉर्म रे दिया जाऊँगी ताकू मॉडर्नाइज करा जाऊँगी तेणु आप देखिए आगामी दिन में मिलेट नॉट ओनली इन इंडिया वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हम और से इंडिया बहुत बेनिफिट हम आम गोटे नुआ प्रोडक्ट देलु चाष को भी रहा लोकों को भी हेल्थ बेनिफिट यस मैडम यस अनेक कथा आलोचना स्वाति टिके शेष प्रश्न पचारे जेहेतु रेलवे और ट्रांसपोर्ट कथा आसूची से 2 लाख रु अधिक कोटी टंकार बजेट भी घोषणा करा जाइछि से बाबद रे टिके पचारंतु 50 टी नुआ विमान बंदर भी हेबो शेष प्रतिक्रिया टिके जानिबा को चाहिबो डेफिनेटली नुआ विमान बंदर कथा कह सहित रेलवे रही बजेट कारण आउ तो पूर्व भली रेलवे सेपरेट बजेट होनी केते रहिबो सेटा बेनिफिट मैडम रेलवे एथरक हाईएस्ट एवर फंड एलोकेट कराई पूरा ओडिशा बेनिफिट ना सेटा ना कहि हेबन बिकॉज़ से स्टेट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट किसी करना सेटा फाइनेंस बिल आसले जना पड़े मत लागुचे ओडिशा को निश्चय किस लगे रेल विभाग रे एते टंका माने वर्तमान जो इन्वेस्ट होउची तो ये कॉमन पीपल जो पुन थर मिडिल क्लास को आसीबा हमें तो मिडिल क्लास लोक प्लेन रे उड़ीबा गोटे स्वप्न थिला बट विगत किछि वर्ष हलानी से वर्तमान स्वप्नटा वास्तवता रहउची आ समान थिंग हमें देखुछु रेलवे अपग्रेडेशन मध्य ये केते बेनिफिट्स बतन रहइबो लोक डेफिनेटली मैडम सत्य आउट के जानि को चाहू ओडिसा पई गोटे स्पेसिफिक समति गोटे पैकेज आसीबार आवश्यकता थिला की से आपण सफर करंतु आपण जानबे कि इट इज इक्विवेलेंट टू योर आई मीन एयर सर्विस संगीता जो कथा आपण कहूतिले डेफिनेटली वर्तमान जेहेतु नुआ बजेट आसी तार क्लारिफिकेशन आउरी मध्य रही कि केते ओडिशा को कोभली भाव में बेनिफिट हम किंतु निश्चित रूप से ये गोटे मध्यवित्त श्रेणी लोक जो मैंने रही से गोटे बड़ आश्वस्त बोली कहि परिबा कारण एथर से दृष्टि रखिकी करा जाइछि बजेट जहाँ आम कथा होतलु चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर आलोचना पाई थिले स्वाति जाना जे कि आलोचना मध्य करथिले एक्सपर्ट मानक सहित समस्त मध्य ए बजेट को एक बैलेंस बजेट मध्य कहउचंती एवं सब वर्ग को जदियो प्राधान्य दिया जाइछि एवं महिला कथा देखंतु स्वास्थ्य कथा देखंतु शिक्षा कथा देखंतु कृषि कथा देखंतु सब दिग को मध्य प्राधान्य दिया जाइछि किंतु बड़ परिवर्तन जो अपेक्षा रहितला समस्त मध्य नजर पकईथिले कोन वर्तमान बजेट रे आसुछि एवं को परिवर्तन आसुछि को दिग को प्राधान्य दिया जाउछि जदियो पूरा आमे कहि परिबा जो बजेट रे सब दिग को जदि प्राधान्य दिया जाइछि किंतु आयकर सीमा जो बदली जाइछि ताहा समस्तक पई गोटे खुशीर कथा एवं समस्त मध्य याको ने कि खुशी भी हेचंती काहिना 7 लाख जाय आयकर छाड़ भी करा जाइछि 7 लाख जाय देबा को पड़िबो नाही टैक्स ए कथा जते अनाउंसमेंट करा गला किंतु बजेट को नेकी बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडांकर कोन प्रतिक्रिया रहिछि हम प्रतिक्रिया सुनबा थिले आपण देखिले एठी प्राय 150-200 बुद्धिजीवी मानक सहित आमे दिल्ली रो बीजेपी कार्यकर्ता माने मिसिकी बजेट को देखिलु कि जोर रे ताली मारुथिले प्रशंसा करुथिले आपण देखिले चारियाडे आपण देखिथिबे एटा टीवी माध्यम रे अन्य मानक माध्यम रे एटा लोक बहुत पसंद करिसेंती एई बजेट रे समस्तक पई किछि ना किछि अछि कृषि क्षेत्र पई अछि आमर सबु समाज रो सबु वर्ग पई अछि एवं मिडिल क्लास पई तो ए जो रिहाती मिलिला टैक्स रे सेति पई से माने ताली मारुछंती किंतु एटा संभव होवा पई गत 9 वर्ष रे जो कठिन परिस्थिति रे आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न मुश्किल समय रे बहुत माने असुविधा समेत देश को यही पर्यंत आनी पारिछंती खास करी कि
बड़ देश मान भितर सबुठारू तेज सबुठारू फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एबे इंडिया हेलानी केवल यही वर्ष नुह गत 6 वर्ष हेलानी एटा पूरा दुनिया सारा समस्ते प्रशंसा करुँच IMF वर्ल्ड बैंक समस्ते भारत रो उदाहरण दौरान जे केभली अर्थव्यवस्था को मैनेज करा जाए किंतु केते कठिन समय था देखु GST इम्प्लीमेंट कला लोक ताको अपोज करते वैक्सीन तैयारी कला लोक ताको अपोज करते एबे भी किछि लोक खास करिकी अपोजिशन रे जाइकी ए सबू नीति गुड़िक अपोज करने चेष्टा करुँच किंतु यही सबू कठिन निष्पत्ति जोगु आज भारत ए स्थिति पहुँची जे गोटे आड़े टैक्स पेयर मान को रिहाती दि जाउची किंतु एका समय रे इकोनॉमी बढ़ी चलची रेवेन्यू बढ़ी चलची इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे जोर दिया जाउची एवं देश आगे चलची। दर्शक बंधु आप तो प्रतिक्रिया शुणुले युवपीढ़ी आरंभ करके वयस्क पर्यंत समस्ते बजट को मध्य प्रशंसा करिसेंती। आपण तो एबे वैजयंत पंडा प्रतिक्रिया शुणुले कहवा कथा जेहेतु सबु वर्ग को प्राधान्य दि जाइछि एहा एक मध्य बालांस बजेट मध्य कहउछंती बजेट रे सबु क्षेत्र को गुरुत्व दि जाइछि। एबे पुनर्बार आम सहित जोड़ी होउछंती आम प्रतिनिधि स्वाति जेना तांको सहित अछंती चार्टर्ड अकाउंटेंट तरुण अग्रवाल। क्षमा करिवे आम सहित सीधासलख जोड़ी होउछंती चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीयुक्त तरुण अग्रवाल। श्रीयुक्त अग्रवाल आपन को ओडिशा रिपोर्टर को स्वागत। श्रीयुक्त अग्रवाल बजेट आसीगला एवं समस्ते मध्य कहते कि बजेट गोटे बालांस बजेट है आपण केमती आकलन करने को चाहिए ये बजेट केमती है आपण भावुंट बजेट इंडिविजुअली बहुत भल बजेट आयर बाय ईयर आम बजेट गुड़ाक फ्यूचरिस्टिक होगी चलुची आगु केमिति दरकार हम जो जो सेक्टर्स रे तार यूज अच्छी से अनुसार बजेट्स को मॉडिफाई कर स्पेसिफिकली आप देखो ग्रीन एनर्जी उपर इन्वेस्टमेंट होची इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेसिफिकली स्टेट्स मानू को इंटरेस्ट फ्री फंडिंग कराई देन आपंकर MSME सेक्टर जो मैंने डिफिकल्टी फेस करते कोरोना समय से गोटे वन टाइम सेटलमेंट तांकर इन्वेस्टमेंट जोड़ा फॉरफिचर अमाउंट होता कॉन्ट्रैक्चुअल प्लस जो प्राइस एस्केलेशन होता जो कि से गुड़ाक गोटे स्पेसिफिक मेकानिज्म एथरे डेवलप कराई एंड टैक्स रेट्स रे भी किसी कम अच्छी स्पेसिफिकली GST गोटे प्रोविजन जोटा कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू से डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस आसी पारे बट इनकम टैक्स रे गोटे जिन डिक्रिमिनलाइजेशन कथा आसी जे बिजनेस रे कला बेले जो क्रिमिनल आस्पेक्ट्स आसूला आपनकर जेल प्रोविजन गुड़ाक था से गुड़ा को डिक्रिमिनलाइजेशन कराऊँ जे बिजनेस करुचे ही तार मिस्टेक हो पारे ही शुड नॉट बी गो टू द जेल सो से पार्टा को एबे एलर्ज कराऊँ। आपण केते 10 आउट ऑफ केते मार्क देबे आपण 10 out of if you ask it's a continuous budget last 4-5 years very good budget is going on so definitely it will be more than 7 श्रीयुक्त अग्रवाल आम टे जानवा चाहिए पूरा क्लारिटी आसवा दरकार जो आयकर सीमा बदली जाइए समस्त मध्य कन्फ्यूजन भी रही गोटे पुराना गोटे रही गोटे नुआ गोटे रही 7 लाख जाए आयकर छाड़ भी करा ये स्लैब बाबद आम टे क्लारिटी आसवा दरकार समस्त भी जानवा दरकार आम भी जानवा चाहूँ क्लारिटी रे देखंतु फाइन प्रिंट्स मते देखिया पड़िबो जहाँ स्पीच रे कहले सेथिरु जहाँ क्लारिटी आसिला जे मिनिमम साइड रे जोटा 2.5 लाख पद टैक्स लागुला सेटा को 3 लाख कराई छै सेकंड होची जोटा आपनकर 5 लाख पर्यंत जहाँ भी टैक्स लागुतला सेटा छाड़ कराइतला माने 2.5 लाख रु 5 लाख पर्यंत जहाँ भी टैक्स आसुतला 10% रे सेटा छाड़ कराइतला सेटा वर्तमान 7 लाख को एनहांस कराई छै ता माने 7 लाख पर्यंत आपनकर इनकम पर किछि टैक्स लागिबो नाही किंतु केमती बेनिफिट्स आप देखुंत गोटे मध्यम धरणर लोक जो मध्यवित्त परिवार लोक ये केमती बेनिफिट्स पाई पारे बेनिफिट देखो आम जो फिजिकल डेफिसिट्स रे आम डाउन होगी जाऊे आमर इंफ्रास्ट्रक्चर्स रे आम इन्वेस्टमेंट करने जाऊे सो निजुक्ति आउ मैन्युफैक्चरिंग ये दुईटा जिनस बहुत वाइडली एथिरे भी बढ़िया जाऊे तो साधारण व्यक्ति डेफिनेटली एथिरे निजुक्ति भी पाइबो काम भी पाइबो और डेफिनेटली तार इकोनॉमी सुधरिबो
आउ टैक्स बेनिफिट्स तो आपको कहली जो 7 लाख पर्यटन टैक्स माइनस होती प्लस ओवरऑल टैक्स रेट भी कमी से कैलकुलेशन करके मैम कहते अराउंड 15,000 अराउंड से बेनिफिट अच्छी प्लस वुमेन्स मान गोटे स्पेसिफिक स्कीम कराई जो से हायर फिक्स डिपोजिट रेट्स नहीं पारे 7.5% जोटा कि बैंक रेट बहुत अधिक सो जनरल लोक ये छोट छोट प्रिकॉशंस अच्छी आउ एमएसएमई इंडस्ट्रीज कारण एमएसएमई जिते सुधरवे साधारण लोकों बिजनेस आ निजुक्ति ओवरऑल इकोनॉमीटा सुधर किंतु सिक्त अग्रवाल जेतु विश्व में मांदावस्था जारी रही केंद्र सरकार मापी चुपी बजेट करिसेंती किंतु आपण भाबुछंती कि आउ टिके कोळ हेतले टिके बेटर हेतांता समस्तक पई आज ए वर्ल्ड आज ए वी आर नाउ मूविंग इन सच आम जिते फास्ट मूव करूँ ए फाइनेंस रे इकोनॉमी रे आमको वर्ल्ड रिसेशन एपर्यंत इंपैक्ट किसी ना से आमर ग्रोथ बहुत अधिक मे बी वर्ल्ड रिसेशन आम गोटे अपॉर्चुनिटी किंतु दर वृद्धि कथा आपन केमती देखिबे कहीं ना आपन देखुचंती किपरि धीरे धीरे वृद्धि भी पाइछि किंतु ए बजेट को देखिले आपन तार ऊपर इंपैक्ट केमती देखुचंती दर वृद्धि बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर बजेट रो स्टेट रू आम कहीपर नहीं किंतु कहीं लास्ट 2 इयर्स दर वृद्धि हो चली किंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा लगाऊे आम जो इकोनॉमी रे ह्यूज मनी आम इनफास्ट आमर आईटी सेक्टर्स रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे इन्वेस्ट करुचे तो फ्यूचर रे आम ताकू इनकैश कर ओके सिक्त अग्रवाल कृषि क्षेत्र को भी बहुत प्राधान्य दि जाइए एवं कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को गुरुत्व दि जाइए 20 लाख कोटी कृषि ऋण फंड भी से करें मत्स्यजीवों भी स्वतंत्र पैकेज करा जाइए भारतीय मिलेट संस्थान गठन हो ए क्षेत्र को आप केमती देखुं ये वेलकम जिनस जमी आपंकर सी फूड ओडिशा रे सी फूड रो जो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी से गोटे जो इनपुट्स आम किणु बाहर से जो कस्टम ड्यूटी सेटा को आहरी कम करने हो जरा कि आमर मत्स्य बिजनेस टाक बहुत भल हम दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्रीकल्चर आउ रेस्ट जी पैसा आम इन्वेस्टमेंट हो एग्री सेक्टर सेटा केमते सीधा सड़क कृषि माने पाई परिबे जो माने चाष करूचंती अति सरलीकरण भाव रे आपण जति बुझेबे कोन बुझेबा को चाहेबे देखो कृषि रे मेन जिनस हूँ मार्केट ड्रिवेन आप प्रॉपर जिनसर मार्केट चाहिदा हवा दरकार और सेल हवा दरकार जिते इकोनॉमी रे मनी फ्लो होची तो चाहिदा रहिबो आ चाहिदा रहिले डेफिनेटली अल्टीमेटली सेटा कृषि को ही इफेक्ट पकेबो तांकर बिक्री दरटा तांको बेनिफिट दबो प्लस आपनकर जो स्पेशल आउटले करा जाउची सेथिरे सेमानकु इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलिबो कृषि सेक्टर रे सिक्त अग्रवाल रेलवे और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को आप केमती देखुं ये बजेट रू आप कौन एक्सपेक्टेशन रखुते ये बजेट आसवा पाखापाखि 2 लाख कोटी अधिक टंकार बजेट भी आसी आपण केमती विश्लेषण करने को चाहिए आम लास्ट वर्ष बाय वर्ष आमर रोड कंस्ट्रक्शन आमर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत स्पीड रेट रे जाउची संगे इलेक्ट्रिफिकेशंस आमर जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आउ अल्टरनेटिव एनर्जी पर जो आम बेसिकली फोकस करूँ से आमर लॉजिस्टिक्स आउ ट्रांसपोर्टेशंस ता सब बेले बेनिफिट आड़ को जीवो से जो कॉस्ट गुड़ा कमिबो से आमर जो ओवरऑल प्राइस हो जोटा दरदाम बढ़ुची से भी तार बहुत बड़ इंपैक्ट हम कहीं डीजेल आउ पेट्रोल कंजप्शन से कमी पारे बिकज पावर सेक्टर रे आम बैटरी ऑपरेटेड आ अदर जिनस गुड़ा जाऊँ आउ कंस्ट्रक्शंस भल रोड्स और भल कनेक्टिविटी द्वारा भी आमर ट्रांसपोर्टेशन आउ लॉजिस्टिक्स खर्चटा कमिला माने आमर प्रोडक्शन को आमर जो सेलिंग प्राइस आमर जो प्राइस दरदाम पर तार इंपैक्ट पॉजिटिव साइड रे हम कम आड़ को जीवो किंतु अपरपटे सीधासलख आनाउंस करा बजेट रे साइकेल ऑटोमोबाइल एवं किछि मोबाइल ता सहित कैमरा लेंस भी सस्ता है किंतु अपरपटे सोना रूपा प्लाटिनम ये सब महंगा हम इटा इकोनॉमी रे गोटे डिसीजन आपनकर कंप्यूटर आपनकर मोबाइल दीज आर आम ए मैन्युफैक्चरिंग करके जाऊँ एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया रे होछ सो मैन्युफैक्चरिंग हब आड़ू आम जाऊँ जोटा कि चाइना गोटे दिन मास्टर थिला आम से गीत आगू को मूव करूँ कि आम भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया रे बहुत गुटे करूँ और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अदर स्टेट्स को अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट हम तो से लाइट रे ये स्टेप्स निया जाउची तेणुक एटा वेलकमिंग किंतु सिक्त अग्रवाल आपण भावुचंती सठिक दिशा रे भारतीय अर्थनीति कोरोना जोगु जतिय विश्व अर्थनीति रे गति कमी किंतु महामारी परे देशर अर्थनीति को आगू को नेबा को काम भी हेछि
निश्चय निश्चय मैंने कोरोनार पीरियड्स को ऑलरेडी कवर कर सारे आम फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी डाउन हो सारे कोरोनार कौन इम्पैक्ट नहीं जहाँ भी कोरोनार किसी इम्पैक्ट थिला ता विषय जमी एमएसएमई रो कहली तार गोटे नुआ स्कीम आनी एमएसएमई तो सेटा को देखिले भी से जो गुड़ाक डैमेज होती भी रिकवरी करने पॉलिसीज को चेंज कर पॉलिसी नहीं भी आउ कोरोनार आम ऑलरेडी इकोनॉमिकली क्रॉस कर जाई सारे वी आर ऑलरेडी इन द ग्रोथ इकोनॉमी ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାରତରେ 7% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ହେଇଛି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି आज्ञा ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर आलोचना पाई इथले तरुण अग्रवाल जे कि आम सहित अधिक आलोचना भी करुले एक बैलेंस बजेट बोली तांकर भी मत रही लगातार भाव गोटे पर गोटे प्रतिक्रिया शुणुचे आलोचना भी करुचे एक्सपर्ट मान सहित चार्टर्ड अकाउंट मान सहित से कहते कि ना ये एक भल निष्पत्ति ये बजेट जो सब दिग को गुरुत्व दि जाए एक बड़ पदक्षेप आम कहीपर गोटे सठिक दिशार भारतीय अर्थनीति पहुँची बोली सीधासख कहते जेहेतु सबू दिग को प्राधान्य मिलूँ किंतु एबे आम सीधासख जो बजेट उपस्थापन करते अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आम आसता प्रतिक्रिया सुनवा Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. India, a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. दर्शक बंधु आपण तो सीधासख प्रतिक्रिया शुणुले गोटे पर गोटे जिते अनाउंसमेंट होता समस्त अपेक्षा करते कौ कौ दिग को गुरुत्व दि जाऊँगी कि समस्त को सुहाइला भली सबू दिग प्रति गुरुत्व भी दि जाए आम सहित सीधासख जोड़ी होती प्रतिनिधि स्वाति जेना सहित एक्सपर्ट मैंने रही आलोचना भी करवा स्वाति मत जब शुणी पार्टी आम तो लगातार भाव आलोचना करुचु किंतु स्वाति ये गोटे बालांस बजेट सब जदिव सब एक्सपर्ट मैंने भी कहते समस्ते भल मार्क भी दौरान 10 आउट ऑफ किए 8 दौर किए 7 दौर किंतु आपण जो मान सहित अच्छा से माने वर्तमान ये जो बजेट आसला कौन एक्सपेक्ट करते कौन आसी डेफिनेटली कारण एक्सपेक्टेशंस बहुत थाए किंतु एथर जितेबाला आम कहूँ आप 10 आउट ऑफ 8 निश्चित रूप से एक्सपेक्टेशंस जहाँ था से हिसाब से गोटे भल आशानुत बजेट होती आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा ब्रह्मा मिश्र रही से स्वागत करुच्ची आपण बजेट को लेकिन खुशी ऑलरेडी व्यक्त कर सारी किंतु आशा कौन रही भाव में प्रतिफलन है आशा तो समस्त डेफिनेटली भल थिला एवं आशा गोटे समस्ते चाहिए जे बजेटा पॉपुलिस्ट बजेट हो समस्ते खुशी होगा चाहती किंतु देश को चलैवा लगी एवं नेशनल जो ग्लोबल रिसेशन बर्तमान देखा जाए एंटायर ग्लोब रे आमर एक्सपोर्ट कमी कमी जाऊँगी आमर इंपोर्ट बढ़ुची ता भितर प्रोटेक्शन केम दे पारे आम इकोनॉमी की बिकॉज आमर इकोनॉमी इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इट इज इमर्जिंग इकोनॉमी. Our growth is the largest, highest growth in our economy, and we have the plan for making 5 trillion budget, 5 trillion economy in 2025. Plus, our net zero kariya, our pollution like 1972 रे, 2072 रे. तेणु ताकू दृष्टि रखी
जो बजेट मत लगुच बहुत बालांस बजेट जो प्रोविजन रखा फॉर ऑल सेक्टर को एड्रेस करा एमएसएमई सेक्टर को दिखाई आपंकर देखिए जो 9,000 करोड़ गोटे गवर्नमेंट ग्यारंटी स्कीम करागला से कोलैटरल टाको केमिति बैंक माने विदाउट कोलैटरल एनकरेज करी एमएसएमई सेक्टर को से प्रोविजन रखा आप स्टार्टअप मान को लॉस सब कैरी फॉरवर्ड करने लगी फॉर 7 years से प्रोविजन रखा आम स्टार्टअप रे होचु थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड टुडे फर्स्ट होची यूएसए सेकंड चाइना थर्ड होची इंडिया तेणु स्टार्टअप को ध्यान रखा एम्प्लॉयमेंट लगी आमर जो यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हूँ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड तेणु यूथ मान केमी स्किल कर स्किल सेंटर प्रोविजन रखा तापे आपणकर स्किल्ड है इवन ट्राइबल एरिया रे भी केमी से स्किल कर एम्प्लॉयबल कर एम्पावर कर ध्यान रखा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रे बहुत एम्फासिस दि जाए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एम्फासिस देले ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट आपणकर बढ़िबो तेणु एमएसएमई सेक्टर को प्राधान्य दि जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राधान्य दि जाए जोड़िक जगह आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेब प्लस जो इन्फ्लेशन देखा दी संपूर्ण विश्व रे आज बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वार एवं आमर जो टोटल वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन ताको हेड ऑन करने एवं भारतर आमर जो ग्रोथ होची ताको प्रोटेक्ट करने लगी सब दृष्टि ध्यान दि जाए जो थे सब इंडस्ट्री मानक मोर एफिशिएंट करने लगी रिसेशन पीरियड रे जो सब इनपुट रॉ मटेरियल दरकार से इनपुट रॉ मटेरियल जोड़ा आम कंट्री ना बाहर इंपोर्ट कर गणा जाउची तार इंपोर्ट ड्यूटी कम कराई जोड़ा एक्सपोर्ट करने लगी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कराई जो थे आम बाहर को आम एक्सपोर्ट कर श्रीम्प लगे श्रीम्प आम जो ओडिशा रे जो मैंने सब माछ चाष कर जो एक्सपोर्ट कर चिंगुड़ी एक्सपोर्ट कर तार कमी दिगला एक्सपोर्ट ड्यूटी तेणु से एनकरेज कर दैट विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर पीपल आपण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बर्तमान जी तादेर ओडिशा लगी केते से रेलवे जो बजेट रखते रेलवे बजेट ओडिशा लगी केते देबे ता ऊपर डिपेंड करुच्ची कारण ओडिशा रे आम एक्सपेक्ट करुँ बजेट रेलवे बजेट आमको सब अधिका टंका मिलले आमर फ्रेट कॉरिडोर हम आमर रेलवे लाइन अधिका हो पार एवं रेक अवेलेबिलिटी आमर बढ़ रेक अवेलेबिलिटी नथिया फल आम गत 3 वर्ष है सफर करुँ कोयला पाऊना वर्षा समय एवं जो पावर जेनरेशन अधिका बढ़ी बढ़ी जाऊँगी पावर रिक्वायरमेंट बढ़ी बढ़ी जाऊँगी पावर कंजम्पशन बर्तमान आहरी बढ़ कारण बर्तमान इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को आसीगला तेणु ए ध्यान भी दि जाए रिन्यूएबल एनर्जी उपर गोबर गैस रु केमती इलेक्ट्रिसिटी जेनेट हम प्राधान्य दि जाए आपको जदि आम सेगमेंट वाइज कहवा माने खास करी एग्रीकल्चर को आम ये मिलेट मिशन कथा उठाऊँ चाषी कौन बेसिकली आ कारण केवल जे आम बिजनेस करवा कि एम्प्लॉयमेंट नुहे ता सहित माने फार्मिंग उपर ध्यान देउछन्ति आरंभ जो आम प्रधानमंत्री कथ कहवा अनेक समय या गुरुत्व रोचे तो ताकू केमती मिलेट मिशन को बहुत प्राधान्य दि जाए ताले गोटे रिसर्च सेंटर जो हैदराबाद रे प्रोविजन करागला तादेरे से फास्ट हो डिजिटली कनेक्ट हो पारे फार्मर्स माने एवं जानीपर कौटी के डिमांड अच्छी फार्मर मान को कहार बर्तमान ऑर्गेनिक मिलेट जब करेंगे ता लगी प्रोविजन कराई इंसेंटिव दवा लगी तेणु फार्मर मान को मिलेट मिशन रे डेफिनेटली हेल्प कर ये बजेट एवं मिलेट मिशन खाली ओडिशा रे नो आम जिते स्टेट्स माने करुँच समस्त एनकरेज करने लगी ऑर्गेनिक फार्मिंग लगी फार्मिंग को एनकरेज करने लगी बहुत प्राधान्य दि जाए बजेट तेणु भावुँ बजेट गोटे बहुत बालांस बजेट होती एवं यही परिस्थिति को रखिक आखिरे सब परिस्थिति रे बजेट अलग टाइप होता है आम नेबरिंग कंट्री देखते पाकिस्तान और श्रीलंका तांकर इकोनॉमी भल हैंडल कर पारे से कोलाप्स कर इकोनॉमी लोक मैंने विद्रोह कर तेणु आम देश में सब आम जदि एक्सपेक्टेशन अनुसार जावा ताल आम राजकोष से ये ना कारण आम ग्रोथ ट्राजेक्टरी अल्सो आमको देखा पड़ो भारत वर्ष जो टाइप ग्रोथ करुच्ची आम कहे भारत वर्ष जगत गुरु हम यहाँ गोटे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हब हम वर्ल्ड तेणु ताकू दृष्टि से दृष्टिकोण आप देखिए जो प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर लगी दिखाई ध्यान दि जाए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट जो हो पार तादेह डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड
जिनस अनेक समय कह जाए कि जेहेतु आगामी वर्ष निर्वाचन रही हुए तो लोकाभिमुखी हो पार थे मुख्यतः मिडिल क्लास लोकों किंतु यार लॉन्ग टर्म इफेक्टा केमती रहिबो मिडिल क्लास लोकों एटा सेमिति बहुत पॉपुलिस्ट बजेट है नहीं किंतु डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन आमर देखा दी थ्रू आउट द वर्ल्ड से इन्फ्लेशन को सम्मुखीन हवा लगी आमर जो मिडिल क्लास लोक मानू किसी रिहाती दि जाए इनकम टैक्स रे स्लाब जो कैलकुलेशन होता है 2.5 रु स्टार्ट होता 5 लाख बर्तमान से 3 लाख रु स्टार्ट कर तेणु 3 लाख पर्यंत बर्तमान 5 लाख पर्यंत कौन टैक्स पड़ो ना बट 5 लाख उपरू जो मैंने टैक्स देवे स्लाब कैलकुलेशन 3 लाख रु 6 लाख देते ओनली 5% तेणु से आपणकर जोटा 5 लाख पर्यंत थे आप टैक्स मोटे देवे ना कि 7 लाख से बढ़ाईदे बर्तमान 7 लाख पर्यटन टैक्स देवा दरकार नहीं किंतु आपड़ जदि सर इनकम 10 लाख अच्छी ताल कैलकुलेशन केमती हम से कैलकुलेशन स्लाब गुड़ा कराई 3 लाख रु 6 लाख पर्यटन आप इनकम आप 5% देवे तापरକୁ देवे 10% देवे यही हिसाब से डिफरेंट जार जार इनकम अच्छे से स्लाब कैलकुलेशनटा अलग बढ़े दिगला से भी 3 लाख पर्यटन कौन स्लाब ना तेणु से समस्ते बेनिफिटेड हे मिडिल क्लास लोक मैंने बेनिफिटेड हे बेनिफिटेड जिते एक्सपेक्टेशन था से अनुसार हो पारनी किंतु जहाँ से विथ द प्रेजेंट सिनारियो तादर इट इज ऑल्सो वेरी वेलकम बिकज आपणकर बर्तमान जदि इनकम टैक्स अधिका लोक मैंने देवे ताले जो इन्फ्लेशन इज मार्केट इन्फ्लेशन ताको हैंडल करा डिफिकल्ट कारण इनकम लोक मानकर बढ़ेनी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट आमर एते आम जेनेट कर एम्प्लॉयमेंट ये किंतु एते प्राधान्य दि जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की प्राधान्य दि जाए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को से गुड़िक सब कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर यूथ एम्प्लॉयमेंट कथा जो आप कहते गोटे पटे एमएसएमई रोचे आ गोटे पर्यटन क्षेत्र को दि जाए प्राधान्य ये दीटाक केते बेनिफिट रहिबो कारण आप गोटे पटे कहते लोकंर इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ से ना कि जतियो स्लैब कथा वृद्धि कराई तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ सहित इकोनॉमिक ग्रोथ ये दीटाक इकोनॉमिक ग्रोथ हम मुझे कहती आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे आमर टोटाल कंट्रीब्यूशन जीडीपी रो जो टोटाल जीडीपी इंडिया तार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट कर 17% तेणु ए प्राधान्य दि जाए एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देवा लगी जो सरकार 3-4 पदक्षेप नहीं से पदक्षेप एमएसएमई सेक्टर रे ग्रोथ हम एमएसएमई सेक्टर हूँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे आफ्टर एग्रीकल्चर तेणु जो मैंने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती से सेक्टर गुड़िक प्राधान्य दि जाए कारण भारत यूथ होती बर्तमान वर्ल्ड सब लार्जेस्ट 25% आम होती यूथ तेणु तादेह से केमी 14 वर्ष जो मैंने अच्छा 24 वर्ष भर बयस ग्रुप अच्छे से एम्प्लॉयमेंट केमी हो पार केमी स्किल कर स्किल सेंटर में प्राधान्य दि जाए एजुकेशन सेंटर में प्राधान्य दि जाए हेल्थ सेक्टर में प्राधान्य दि जाए एवं कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगी सब स्टेट मानक इंटरेस्ट फ्री लोन देवाई प्रोविजन रखाई तेणु स्टेट मैंने जब आणिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताल ऑल्सो बहुत तादेह आपको एम्प्लॉयमेंट मिल टेक्सटाइल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मिल माइक्रो स्टार्टअप्स रे एनकरेजमेंट दि जाए एमएसएमई सेक्टर को एनकरेजमेंट दि जाए तेणु सबुड़ देखिले गोटे बालांस बजेट जो सब दृष्टिकोण आप देखिए ताले जदि देखा कि जो मानकर आवास योजना गोटे बड़ बजेट एथर होती तो ये माने जो रहिले निम्न वर्ग रहिले से गोटे आश्वस्ति ना कौन कह जाए डेफिनेटली समस्त घर जोगाई देवाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना करा जाइए एवं फूड ग्रेन जो दिया सिक्योरिटी फूड ग्रेन 80 कोटी लोगों को ये हूँ बहुत भल पदक्षेप कारण सोशल सिक्योरिटी आम गरीब लोक केमी दि जाए कहीं भोक बस न मरवे एवं समस्त को गोटे छात्रटे मिलवा दरकार से लगी जो प्रोविजन रखाई आम स्वागत करुँ ब्रह्मा मिश्र सहित गोटे जो बजेट रही ओभरअली जदि आम कहुपर कि गोटे संतोषजनक रोचे खास कर आम कहीपर माने मध्यवित्त श्रेणी कथा कहतु युवक कथा कहतु कि चाषी कथा कहतु एपरिक जदि देखा निम्न मध्यवित्त जो मुंड पर छात और किभली भाव में से खाद्य जोगाई दिज्व तो ओभरअली सब किसी को दृष्टि रखिकी गोटे बजेटा हो समस्त मत
मध्य रही आपण आलोचना करुले बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर आलोचना ये स्वाति सेना जे कि सीधासलख एक्सपर्ट मान सहित आलोचना भी करुँच लगातार भाव आम आपण को देखा कौ क्षेत्र को गुरुत्व दि जाइए आपण मैंने केमती कौन बेनिफिट पाइपर से दिग उपर आम आलोचना भी करुचे एथिरे कौन सस्ता कौन महंगा आम आपण को अपडेट दौचु किंतु वास्तव में दर्शक बंधु ये बजेट रे आपण केते सैटिस्फाई रही आमर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनातु एवं आम सहित जोड़ी ही रुहतु किंतु दर्शक बंधु आप लगातार भाव ये जो दिग उपर आम आलोचना करुचे किंतु आम जदि पर्टिकुलर आलोचना करबा प्रमुख जो मंत्रालय रही क्या केते टंका दि जाइए से विषय में जो आलोचना करवा दर्शक बंधु तो प्रतिरक्षा मंत्रालय को दि जाइए 5.94 लाख कोटी सड़क परिवहन जातीय राजपथ को दि जाइए 2,70,000 लाख कोटी एवं रेलबाई को दि जाइए 2,41,000 लाख कोटी एवं अपरपटे जी आप देखिए खाउटी व्यापार साधारण बंटन कथा जी देखिए 2,06,000 लाख कोटी दि जाइए अपरपटे स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्ष को दि जाइए 1,96,000 लाख कोटी आलोचना करबा आम सहित जोड़ी होती अर्थनीति समीक्षक प्रदीप कुमार पंडा श्रीयुक्त प्रदीप कुमार पंडा आपन को ओडिशा रिपोर्ट को स्वागत श्रीयुक्त पंडा आम टी जानवा चाहबू ये बजेट रु आपणकर एक्सपेक्टेशन कौन थिला एवं कौन वर्तमान आसी रियलिटी आसी आपण ये बजेट को लेकिन कौन विश्लेषण करने को चाहिए हाँ बेसिकली बजेट टा जेतो लास्ट फुल बजेट थिला ई टर्म ता तो एक्सपेक्टेशन थिला ग्रोथ ओरिएंटेड हबो और एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फोकस दिया गोटे भल जिन अच्छी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रे सब तो अधिक रखाई 10 ट्रिलियन जोटा कि पाखापाखि 3.3% ऑफ जीडीपी एटा गोटे भल रही सहित फोकस रही मिलेट को ग्लोबल हब फॉर मिलेट करने एलोकेशन से रही एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड रही एग्रीकल्चर स्टार्टअप मैसिव डिस्टेंस डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी कराई सहित पाखापाखि एनीमिया को दूर करने 2047 सुधा गोटे मिशन कराई सहित रिसर्च एंड डेवलपमेंट उपरे फार्मा हो कि आमर डिफरेंट सेक्टर्स हो तापर फोकस दिया पंडा निर्वाचन वर्ष में गोटे मास्टर स्ट्रोक भी देइछन्ति केंद्र सरकार कहीं 2 वर्ष है मध्यवित्त वर्ग को टिकस स्लाब रे निराश होगा पड़ूला किंतु ए वर्ष जदि आयकर स्लाब सीमा देखिए 5 लाख रु 7 लाख को वृद्धि करा जाइछि सेटा आपन को डिटेल टिके देखिया पड़िबो कारण वर्तमान दीटा कंफ्यूजन होची ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम कहउछन्ति न्यू टैक्स रेजिम विल बी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम जब डिफॉल्ट हो न्यू टैक्स रेजिम में हमरा एक्सेप्शन गुड़ा कम थिला तो डिटेल जना पड़िबो कि सातकर जो 7 लाख पर्यंत आयकर छाड़ तार रियलिटी ता केते कारण न्यू टैक्स रेजिम में सब 80C और 80D रे जो मतलब छाड़ गुड़ा थिला डिडक्शन गुड़ा थिला किछि नथिला किंतु ओल्ड टैक्स रेजिम रे डिडक्शन बेसी थिला तो सेट पई सेटा डिटेल के देखिया पड़िबो कि हमर कोन माने प्रोविजन अछि किंतु बहुत गुड़ा सेक्टर पे नुआ योजना आसी लाइक मैंग्रोव प्लांटेशन पे मिस्टी स्कीम आसी अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर पे पीएम प्रणाम आसी सेमती 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर तैयार करने लक्ष्य रखाई 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कराई सहित नेशनल फाइनेंशियल इनफॉरमेशन रजिस्टर डिजिटल इंडिया को बेसी फोकस दिया बहुत गुड़ा कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप भी गुरुत्व दिया जाइए हाँ हाँ कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड एग्रीकल्चर स्टार्टअप मान दि जाइए गोटे भल सूचना और स्टोरेज उपर ध्यान दिखाई स्टोरेज कैपेसिटी किसी फंड रखाई सहित आम जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़ा था मल्टीपर्पज करके 5 लाख पंचायत स्ट्रॉन्ग करने चेष्टा रही और फोकस आम वर्तमान केमिकल फर्टिलाइजर यूज न करके नेचुरल फार्मिंग आड़ को जीवाई बंदोबस्त कराई गोटे कोटी चाषी को नेचुरल फार्मिंग करने प्रोत्साहन दिज्व जोटा कि भल पदक्षेप हाँ जिते आम नेचुरल फार्मिंग करवा हमर प्रोडक्टिविटी बढ़िबो और इनकम भी बढ़िबो
ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କନସର୍ନ ଟିକେ ରହିଗଲା କାରଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କିଛି ସେମିତି सूचना आसी कि 38,800 शिक्षक नियुक्ति देवे केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र को गुरुत्व दि जाइए से जो नियुक्ति कथा कहुई 38,800 शिक्षक नियुक्ति देवे टीचर और स्टाफ 740 एकलव्य स्कूल रे नियुक्ति है से गोटे जिन रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे फोकस रखा 30टा जमी कहले स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर करा तो स्किल डेवलपमेंट ऊपर केते दिया जीवो एकटा जो जाना पड़ो कि बजेटरी एलोकेशन दा पई किछि सेठी टिके सेठी डिटेल जेतले आसी जाना पड़ो। आपण चाहुचंती कि आ रोजगार को माने जो अनएम्प्लॉयमेंट कथा को जाउची रोजगार कथा को जाउची से ऊपर टिके बेसी गुरुत्व दिया जाई थांता। श्रीयुक्त पंडा ये आलोचना भी करवा आम सहित सीधा सड़क ए जोड़ी भी होती आम प्रतिक्रिया शुणी ना बीजेपी सांसद सुरेश पूजारी कौन कौन कहते प्रतिक्रिया नहीं गुड़िए बजेट कम बेसी आम अध्ययन करतीतर भारतीय जनता पार्टी बजेट देखीचु अटल बिहारी वाजपेयी समय बजेट देखीचु कांग्रेस समय बजेट देखीचु से समय तो कांग्रेस रे बहुत बड़ बड़ अर्थनीतिज्ञ मैंने देशर प्रधानमंत्री अर्थमंत्री होते किंतु ये बजेटर तुलना नहीं कांग्रेस जोटा दाबी करुच्ची से गोटे जिन तो स्वीकार करुच्ची जे ये बजेट सर्वोत्तम बजेट तेणु विरोधी भी सर्टिफिकेट दौरान प्रतिपक्ष तो सर्टिफिकेट अच्छी मत लगुच जे ये बजेट रे विरोधी एवं समालोचक मानकर मुह बंद होगा निर्वाचन बजेट बोली कांग्रेस ने आउ गोटे बजेट हेब प्रकृति में यहाँ पूर्णांग बजेटा आगामी साधारण निर्वाचन पूर्व पुणी गोटे कामचला बजेट उपस्थापना हेब तापर जाकि देश निर्वाचन आड़ को मुहब तेणु ये बजेटा निर्वाचन बजेट नुह आउ ये बजेटा अन्य वर्ष भाया साधारण बजेट जो मिलेट्स कथा कहतु बा स्वदेश दर्शन स्कीम जो आनी से राज्य बेनिफिट होवार यथेष्ट संभावना रही नहीं देखो से स्वतंत्र भाव में राज्य मान सुध मुक्त ऋण जो देवार योजना 2 वर्ष है चली आउ गोटे वर्ष को एक्सटेंड कराई जो राज्य मैंने चाहिए से माने सुध मुक्त ऋण और केंद्र सरकार ठाकुर नहीं पारे एवं यह योजना प्रस्तुत होती जो योजना रे जोटा पछुआ राज्य जो मान विकसित हो ना से अधिक धनराशि देवाई स्वतंत्र पांठी तैयारी तेणु ओडिशा से दिगरे जदि प्रयास करिबो चेष्टा करिबो एवं योजना केंद्र सरकार पाखरे पहुंचेबो मते लागुची ये निर्दिष्ट योजना रे ओडिशा सबुतु लाभान्वित हबार राज्य हो पारिबो। दर्शक बंधु आपन तो सीधा सड़क बीजेपी सांसद सुरेश पूजारी प्रतिक्रिया शुणुले लगातार भाव से स्वागत करिसेंती गोटे भल बजेट बोली कहते समस्त पार्टी भी चुप हो श्रीयुक्त पंडा आम आपण सहित लगातार भाव आलोचना करुचु आपण भावुं कि ये बजेट को देखी समस्ते चुप हो ओके जोगाजोग विच्छिन्न होती श्रीयुक्त प्रदीप कुमार पंडा सहित आम लगातार भाव आलोचना भी करूँ अर्थनीति समीक्षक सहित किंतु ये बजेट को लेकिन वर्तमान बालेश्वर रे कौन चित्र रही केमती ग्रहण आम मान किसी अधिक नाही इलेक्ट्रोनिक्स जिनस सस्ता है आप कहते महिला मान जो आशा रखी से भली किसी विशेष है ना कौन आज्ञा इलेक्ट्रोनिक्स देखो आज्ञा एमती कि टीवी हो कि मोबाइल हो समस्त पाखे घरे एवेलेबल रही कोविड पीरियड पर पाखु एवं से सब जिन तो समस्त पाखे थिला किंतु अर्थर बहुत अभाव थिला कि डाली जो आम नीतिदिनिया किणुचु से जिन गुड़ी आम बहुत जरूरी मोबाइल टीवी निहाती आम जरूरी नुहे निश्चित जरूरी नुहे कहीं भौन कहते जो कथा जो स्वल्प संचय कथा 7.5% आपको स्वल्प संचय मिल जोटा महिला सम्मान पत्र कथा कहुच्छी खुशी ना हाँ से निहाती खुशी होचु निहाती खुशी होचु किंतु आमे स्वल्प समस्ते तो संचिबाटा भल कथा किंतु आमे तो निज आगे खाई पारिले तापर तो संचिबु ना से पॉकेट रो केमती बंचिबो तापर संचय करबे राजश्री ये होची मुख्य प्रसंग जो कथा को नेकना आपण सुनुतिले जे मो सहित जो गृहिणी माने थिले से माने बजेट को नेकना निज निजर अभिव्यक्त करूथिले किंतु
सीधासख आपण तो बालेश्वर चित्र दर्शक बंधु देखुले महिला मान आउ टिके आउ बड़ पदक्षेप नि जाइथा एवं आउ बड़ अनाउंसमेंट करा जाइथा जहाँ आशा रहूला किंतु केवल मोबाइल एवं किछि इलेक्ट्रोनिक सामग्री को सस्ता कर देकी एभली भाव बजेट रे आसीबा एवं एई क्षेत्र को गुरुत्व देबा ताहा को सहज ग्रहण करि पारु नांती महिला माने एवं आउ टिके महिला को टिके प्रायोरिटी देबार आवश्यकता थिला जहाँ कहउचंती जदिओ बजेट रे महिला मान को गुरुत्व दिया जाइछि किंतु महिला मानकर कहवा कथा ये सेतिक नो आउ टिके बेटर हेतिले भलो होई पाई थांता काहेना महिला को समृद्ध करने को आरंभ हो महिला समान बचत पत्र जहाँ बजेट अनाउंसमेंट करा जाइछि स्वल्प संचय जरिया 2 वर्ष पाई स्थायी जमा व्यवस्था मध्य करि परिबे 2 वर्ष पाई झियो और महिला नारे स्थायी जमा रखा जाई पारिबो किंतु यहाँ को लेकिन वर्तमान टिके आशंकार रही टिके द्वंद्व भी रही टिके मन दुख भी रही महिला मानकर कहीं आउ टिके बेटर हो पारे भल होता एक्सपेक्टेशन अनुसार जहाँ एक्सपेक्ट करुले से एक्सपेक्ट अनुसार से एक्सपेक्टेशन अनुसार ता है ना बोली जहाँ मतामत रही जदिओ आम अनेक एक्सपर्ट मान सहित आलोचना करुचु से युवापीढ़ी कथा कहतु एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट कथा कहतु समस्ते ओवरऑल ए बजेट को समर्थन करुछंती यहाँ को भल बजेट कहते किंतु आउ टिके कोहलते टिके भल होता एवं आउ टिके महिला क्षेत्र कथा कहतु एवं रोजगार कथा कहतु एवं किछि जो मानकर प्रतिक्रिया आम शुणुले से कहवा कथा महिला एवं रोजगार को बेसी टिके प्राधान्य देता आउ टिके बेटर हो पारि था जहाँ तांकर मतामत रही किंतु दर्शक बंधु ये बजेट रु जहाँ भी एक्सपेक्ट करा जाउतला ता ओवरऑल किंतु आम जदि कहिपारिबा सामग्रिक विकास मध्य को गुरुत्व दिया जाइछि एवं सबु वर्ग लोक को टच भी करा जाइछि समस्ते ए बजेट रु किपरि फायदा पाई पारिबे सेथिपाई सबु दिग को ध्यान दिया जाइछि किंतु जेतु आगु को निर्वाचन भी रही किंतु निर्वाचन नहीं सेमती किछि भी गोटे बड़ा अनाउंसमेंट भी करा चाहिए एवं आगु को मध्य जहाँ सुरेश पुजारी मध्य कहउतले निर्वाचन पाई सेमती किछि भी गोटे बजेट सेमती करा जाए नहीं ये गोटे साधारण बजेट बोली कहते जहाँ सुरेश पुजारी आगु को मध्य रही आगु कम सारा बजेट भी उपस्थापन करा किंतु अपरपटे आप देखु निर्वाचन वर्षे बजेट उपस्थापन कर नरेंद्र मोदी सरकार मध्य शिक्षक नियुक्ति को नहीं बड़ घोषणा जदिओ करिसेंती बजेट उपस्थापन कर निर्मला सीतारमण भी कहते केंद्र सरकार शिक्षा और नियुक्ति को गुरुत्व देउछंती केंद्र सरकार आसंता 3 वर्ष मध्य एकलव्य मॉडल आवासिक स्कूल गुड़िकर 38,800 शिक्षक और सपोर्ट स्टाफ को नियुक्ति देबा बोली कहते किंतु एबे पुनर्बार आउ एक दिग उपर आलोचना करने पूर्व एबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रतिक्रिया शुणिनबा As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. दर्शक बंधु कौन सस्ता कौन महंगा कथा तो शुणुले किंतु एबे हम जयपुर को जीवा जयपुर वर्तमान बजेट को लेकिन कौन प्रतिक्रिया दौरान सब स्थानीय बासिंदा माने प्रतिक्रिया शुणवा बढ़िया लगे ना कारण आम जिते टैक्स रे छाड़ दौरान छूट दौरान किंतु आज जो नित्य व्यवहार्य सामग्री दर वृद्धि को नियंत्रण कर आवश्यक रही केंद्र सरकार जो सरकार को आसिले सी प्रत्येक वर्ष कोटिए लोक युवक नियुक्ति देवा कथा कहते चाषी मान आय द्विगुण करार कथा कहते किंतु तार कौन सुफल आज पर्यंत मिलला ना तेणुक आज जो बजेट प्रत्येक वर्ष बजेट कर सरकार किंतु तार तृणमूल स्तर कार्यकारिता साधारण लोक प्रभाव पड़ो एबे तो हठात जना पड़ो ना आउ 2-4 दिन 5 दिन गला पर टैक्स जो फरकटा लोक जना पड़ो निश्चित भाव में जो भाव में टैक्स सुफलता लोक मिलवा कथा विशेषकर निम्न मध्यवित्त श्रेणी लोक जो भाव में टैक्स फायदा मिलवा कथा से भाव में मिल पार ना मुझे भावुची तेणुक बजेट रही निश्चित भाव में मिश्रित प्रतिक्रिया आम रही आपन कौन कहे देखो बजेट रहा टैक्स पेयर कथा जो कहते जब आम देखा विभिन्न क्षेत्र को शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन आपको नहीं कि कौन रही कौन नुआ नुआ प्रोजेक्ट आसी कि कौन आर्थिक सहायता आसी कि कौन कहे देखो गोटे यहाँ खुशी लगे 157टा गोटे नर्सिंग कॉलेज खोलिया सरकार गोटे धार्य कर 50टा एयरपोर्ट को डेवलप करने यहाँ खुशी लगुच आ गोटे आम देखलु जातीय हारटा जो पेर कैपिटा इनकमटा तार भी वृद्धि घटी यहाँ गोटे
खुशी खबर पंचम बृहत्तम अर्थनीति आमर आर्थिक क्षेत्र जो पंचम स्थान अधिकार करची इंडिया यही फोकस रे आम देखिलु बजेट रे गोटे खुशी लगिला आ गोटे आम देखीचु मिलेट मिशन को भी गुरुत्व देइछि आम अंचल कि आदिवासी क्षेत्र में जो शिक्षा स्वास्थ्य को ध्यान देइछंती आ रेलवे क्षेत्र में भी जो 2,40,000 कोटी टंका इन्वेस्ट करिवे बोली धार्य करछंती सेटा भी खुशी लगिला ई क्षेत्र जाको को विशेष करी गुरुत्व देइछंती केंद्र सरकार या खुशी आमे देखुते जपर कि प्रतिक्रिया जो माने जितना टैक्स कथा हो कि विभिन्न दिग को देखा जाए किसी मिश्रित प्रतिक्रिया रोचे तो बर्तमान देखा कथा शेष हवा पर 2-3 दिन भीतर तार प्रभावटा कौन रोचे दर्शक बंधु ये जयपुर चित्र आपण मैंने देखुले समस्त भिन्न भिन्न मत भी रही समस्ते विभिन्न दिग को लेकिन विश्लेषण करुँचे जो थे पारंगम रही से दिग को लेकिन विश्लेषण करुँची प्रतिक्रिया तो शुणुंट किंतु आउ टिके क्लारिटी आसीगले ही जना पड़ो वास्तव में यार इम्पैक्ट आपण मान कौन पड़ुछि केते फायदा आपण पाई पारुछंती ताहा तो जना पड़ो आउ 3-4 दिन पर पूरा क्लारिटी गोटे आसीजिवो किंतु एबे जो बजेट आसी समस्त मध्य कहउछंती कि बजेटा गोटे बैलेंस बजेट बोली किंतु ओवरऑल आपण माने देखुचंती ये बजेट रे सबु वर्ग को सुहाइला भली काम भी करा जायछि सर्वप्रथम कहवा गले आज निर्मला सीतारमण जो बजेट टी उपस्थापन करछंती ताहा एक राजनीतिक बजेट परि लागि गला कहीं आसंता किछि मास भितर 4-5टी राज्य रे इलेक्शन होबाक जाउछि तेणु करी वोटर मान को आकृष्ट करबा को सी इनकम टैक्स स्लैब टाको बढ़ाई जोटा कि 3 लाख पर्यंत संपूर्ण छाड़ अच्छी किंतु 15 लाख रु जी अधिक इनकम कर 30% स्लैब रे रखिंट जोटा कि समस्ते मिडिल किंबा मिडिल क्लास लोक 15 लाख इनकम न कले कौन प्रकार ऋण मिल पारुनी तेणुक जी भी ऋण पे जीव बैंक को से 30% स्लैब रे इनकम टैक्स भरी ही ऋण पाई पारिबो तेणुक यह बोझ उपरे ललिता बिड़ा सदृश हो जाइए तेणुक मु दया करी राज्य सरकार हो किंबा केंद्र सरकार ये जो आम परी एमएसएमई भितर अच्छु किंबा स्टार्टअप इंडिया कहते स्टार्टअप ओडिशा कहते एम किसी प्रोत्साहन देवे आउ इनकम टैक्स स्लैब टाक किसी जदि आम कोहल करिए माने आम चिर उपकृत रहिबो दर्शक बंधु ये तो प्रतिक्रिया शुणुले किसी लोक टे विरोध कर जो आयकर स्लैब सीमा को लेकिन टे कन्फ्यूजन भी रही जदियो एते धीरे धीरे बढ़ी मध्यवित्त वर्ग मान जदियो सुहाई इलेक्शन को आखि आगे रखिकी गोटे राजनीतिक बजेट बोली कहते किंतु आम टिके बोझ उपर ललिता बिड़ा सदृश होगला किंतु अपरपटे राउरकेला को जीवा एवं राउरकेला केमती कौन स्थिति रही राउरकेला केमती बजेट को ग्रहण करुँच प्रतिक्रिया सुनवा जहाँ भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रही प्रतिक्रिया ही नेबा जी आम राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभापति अच्छा जो देखिए बजेट रे जो कंपनी मान कथा जो कह जो व्यवसायी मैंने प्रति किसी रहा बजेट निश्चित रूप से आप गोटे देखिए जोटा कोविड पीरियड जो मान बहुत बड़ा प्रॉब्लम छिड़ा होता जो मैंने जॉब वर्क नहीं जो मैंने एमएसएमई सेक्टर जो मैंने जॉब वर्क नहीं काम करते एवं टाइम रे से मैंने जॉब दे पारे बोली जो सब पैसा प्रॉफिट हो जाता आज सब बड़ जिनस कले मोदी गवर्नमेंट रे डिक्लेयर करागला जो पैसा प्रॉफिट करा से अमाउंट को इमीडिएट 95% रिफंड करा बोली एटा गोटे बहुत बड़ घोषणा द्वितीय जो आशा रखीचु निश्चय एमएसएमई सेक्टर टू कहतु लार्ज सेक्टर कहतु समस्त को केमी बेनिफिट मिल और राउरकेला चैम्बर सब खाली जे इंडस्ट्री रिलेटेड रहनी छोट बेपारी क्षुद्र बेपारी टू नहीं कॉमन पीपुल पर्यंत चिंता करे और सजेशन पठाए जोटार कि सजेशन द्वारा आम आशा थिला जे निश्चित रूप से टैक्स जो आपंकर स्कीम रिहाबिलिटेशन माने लगभग टैक्स जो कि मिनिमम इनकम जोटा थिला 2.5 लाख टंकार टैक्स लागू नाला एग्जामिटेड थिला 5 लाख पर्यंत आम गोटे डिमांड थिला आशा थिला किंतु सरकार आशानुरूप भाव 3 लाख को आनिले एवं बाकी जो टैक्स स्ट्रक्चर रही से रहा 3 ରୁ 6 लाख पर्यंत 5% रहा 6 लाख ରୁ 9 लाख पर्यंत 10% रहा 10 लाख ରୁ 15 लाख 12% रहा एवं 15 लाख ରୁ 20 लाख जोटा कि 20% रहा कि आम चाहूँ बड़ बड़ कॉर्पोरेट हाउस कहतु हाईएस्ट जो मैंने टैक्स रेवेन्यू दौरान आज दिन में भारत वर्ष में 11,000 कोटी लोक टैक्स पेमेंट कर लोकर पपुलेसन देखिए 130 कोटी उपर कि जदि सरकार टैक्स को सरलीकरण करेंगे ताहले आसंता वर्ष देखिए निश्चय बजेट बेलू यही सरकार रे 11,000 कोटीटा
22,000 कोटी टैक्स पेयर जदि होइजिबे रेवेन्यू आहुरी सरकार को राजस्व आसीबो सरकार तापरे निश्चय चिंता करबा कथा। दर्शक बंधु आपन तो देखुचंती विभिन्न अंचलर ये प्रतिक्रिया आपन शुणुचंती किंतु ए विषय में लगातार भाव आलोचना भी करूछु एवं किछि लोक याकू समर्थन करूछते एवं किछि लोक याकू टिके ग्रहण करि पारु नाहंती किंतु एबे आलोचना करबा हम सहित जोड़ी होउछंती ओडिशा रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर ज्ञानदर्शी साहू। ज्ञानदर्शी आपण जेतेबेले बजेट को देखुचंती ए बजेट रु आपण भाबुचंती ये गोटे केमतिया बजेट हेची भल बजेट हेची ना आपण भाबुचंती किछि नेगेटिव भी रहिছে एतरे? देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो अलग कथा। प्रथम कथा देखो जो भाव से निर्वाचन वर्ष कथा जमी आप कहते आलोचना करुले निर्वाचन वर्ष कथा कहतु कि भित्तिभूमि निवेश कथा कहतु यार तो गोटे लंग रन यार गोटे रिटर्न आसो किंतु बेसिकली यदि फोकस दबा जोटा कि साधारण लोक मार्जिनाल फार्मर कथा कहतु छोट जो क्षुद्र और नाममात्र चाषी कथा कहतु कि साधारण लोक मान कथा कहतु जो मैंने क्षुद्र व्यवसायी मान कथा कहतु और से कौन व्यवस्था रही देखा निश्चित भाव से कौट ना कौट निराश होगा पड़ो कहीं देखो दर दाम वृद्धि में जो भाव साधारण लोकटे पेशी हो जाए आपड़ देखो चाउल कथा कहतु डाली कथा कहतु तेल कथा कहतु जो अत्यावश्यक सामग्री जहाँ रही इवन पोशाक कथा कहतु ये जो मौलिक सुविधा जहाँ साधारण लोकटे आभेल करिया कथा से संक्रांत में कौन उल्लेख रहा नहीं एवं जो महंगा कई कथा कहुच्छे दरदाम वृद्धि कथा कहुच्छे से संक्रांत में कौन ठोस पदक्षेप निगला ना केवल एतिकी दिगला जे जो इनकम टैक्स स्लैब टाक जोटा 5 लाख था 7 लाख करागला किंतु सेटा यथेष्ट नुहे। बड़ कथा हूँ जोटा कि दैनंदिन जीवन में जो साधारण लोकटे जो तार अत्यावश्यक सामग्री जमीक कहती जो डाली अटा चाउल ये सब रेट कमिले हुए तो तार सीधा सड़क फायदा से नहीं पारिबो। एवं देखो आ गोटे कथा पेट्रोल डीजेल दर जो देखा अंतर्जातीय मार्केट रे जो क्रूड ऑयल बर्तमान बैरेल पिछा आसी पाखापाखि $60 तले रही एवं आम $100 थिला बेले आम दौले लिटर पिछा 103 टंका और $60 तले रही भी आम बर्तमान दौचे लिटर पिछा 103 टंका। साधारण लोकटे जितेबाला बजेट कथा पचरा जाऊँगी जो आम प्रतिक्रिया नौचु से सीधा सड़क तार कहबार कथा हो आम कौन पाचु एथरू आम भी तो ये 103 टंका दे पेट्रोल पकाऊँ आम भी तो 100 टंका दे से चढ़ा दर से उच्च दर में तेल किणुचु घर संसार बा देखा जो साधारण गृहिणी प्रतिक्रिया आप शुणुवे से कहबार कथा से हांडी शाल को जो माड़ होती से रिहाती पाइबे कि यहाँ हूँ सीधा सड़क कथा किंतु यार उत्तर बर्तमान देखा कोट ना कोटी हे तो ये जो बजेट उपस्थापन बेले ये संतोषजनक उत्तर से मिल पारि ना। तो मुख्य कथा हूँ जो साधारण वर्ग मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त वर्ग जो रहिले से बर्तमान फोकस करा था जिते बजेट उपस्थापन कराए कोटी टंकार व्यय बराद है भित्तिभूमि व्यय बराद है से IT स्लैब कमिला बहुत जिनस कथा आसे ठीक अच्छे जो विश्व अर्थनीति को सहित ताल दे जो भारतीय अर्थनीति चलुची एवं विश्वर जो अर्थनीति मांदावस्था रही मुद्रास्फीति गोटे बर्तमान चिंताजनक स्थिति रही जो फिस्काल डेफिसिट वित्तीय नियंत्रण कथा कहुच्छी जदिव टार्गेट रखा से टार्गेट अचिव हो पारना कि ये सबू सत्वे साधारण लोकटे किभली तार घर चली पारिबो कम रोजगार केमी घर टी चल पार और दरदाम वृद्धि जोटा गोटे बड़ रही चिंता रही केमी यहाँ कमी पार बजेट अधिक गुरुत्व देते हे तो साधारण ज्ञानदर्शी आप वित्तीय नियंत्रण कथा कहते मोट GDP 5.9% रही आकलन भी करा 2025 सुधा वित्तीय नियंत्रण 4% 4.9% को आने को आकलन भी करा ए दिगरे टिके फोकस दे जाइए किंतु आउ टिके करथिले बेटर हो पारता जमी रोजगार कथा कहतु एवं मध्यवित्त को आउ टिके फोकस देवार आवश्यकता रही। निश्चित भाव देखो जो वित्तीय नियंत्रण कथा कहुए वित्तीय नियंत्रण सब गोटे टार्गेट फिक्स कराए प्रति वर्ष देखो जो भाई टार्गेट रखा जाए टार्गेट अचीव करने सहज हे ना किंतु गोटे जेहेतु अर्थनीति आगक नवाक गोटे फोरकास्ट कराए गोटे से प्रेडिक्शन कराए गोटे टार्गेट को लेकिन चलिया पड़े केंद्र सरकार एभली एक टार्गेट रखिंट किंतु सहज हे ना वर्तमान स्थिति रे बा आगू जो देखा जदि आहरी एभली उत्कट स्थिति आसे हे तो ये जो टार्गेट रखा जाए टार्गेट पुणी बढ़ी पारे किंतु बड़ कथा हूँ गोटे साधारण लोकटर एथर किसी लेनदेन ना
साधारण अर्थनीति देखा विभिन्न क्राइटेरिया रही विभिन्न दिग रही गुरुत्व दिजार आवश्यकता रही आम मना करूना जे भित्तिभूमि क्षेत्र निवेश हो 5G क्षेत्र में अधिक लाभ जो क्रिएट कराई अधिक निवेश कराऊ एवं रेलवे क्षेत्र में निवेश हो नुआ नुआ टेक्नोलोजी आम जो भाई विश्व अर्थनीति विश्वर जो मैंने रही जो अमेरिका कथा कहतु यूके कथा कहतु से जो पेसर जाऊँ से पेसर जाऊ ये सब जिनस सहित जमीक कहते साधारण लोकों गुरुत्व देवार आवश्यकता रही जो देखो क्षुद्र नाममात्र चाषीटे शीतल भंडार ना बर्तमान आप देखो कोबी टमाटो जो सीजन चली प्रोडक्शन सीजन चली बर्तमान अभाव बिक्री शिकार हो मार्केट नौनी बिलरे तोलुनी चाषीटे बर्तमान बिलरे तार टमाटो तोलुनी तो कोबी तोलुना कहीं तार अंडर भैल्यू अच्छी जेहेतु सी सीधा सड़क नहीं कि मार्केट जाऊँगी टंका भी तार उठब ना तो ये नहीं पदक्षेप नवार आवश्यकता थिला जो अधिक कोल्ड स्टोरेज निर्माण हो चाषी को इनसेटिव आकार हो चाषी पाखे केमी सीधा सड़क ऋण पहुँचा कथा हो ये सब जिन क्षेत्र में अधिक अग्राधिकार देवार आवश्यकता रही है विशेषकर से क्षुद्र व्यवसायी जो मैंने रही जो मैंने कम रोजगार व्यवस्था रही से अधिक फोकस देवार आवश्यकता रही है। ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर आलोचना थे ओडिशा रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर ज्ञानदर्शी साहू जी कि आलोचना भी करुले अनेक दिग रही से दिग को टच कर आवश्यकता रही है कहीं आप देखुं गोटे पटे आप देखुं इन्फ्रास्ट्रक्चर कथा को गुरुत्व दि जाइए कि अपरपटे आप देखिए तेबे जो दरदाम वृद्धि कथा कहुच्छी दरदाम वृद्धि होबार टी आवश्यकता थिला आउ टिके जो गरीब मध्यवित्त कथा आप आलोचना आम करुले ज्ञानदर्शी सहित ताकू मध्य आउ टिके गुरुत्व देइथिले आउ टिके बेटर होता आउ टिके कोहल करथिला आउ टिके बेटर हो पारि थांता किंतु आउ 3-4 दिन परे यार इम्पैक्ट कौन पड़ुछि एवं साधारण लोकटी मध्यवित्त वर्गर लोकटी केते फायदा पाई पारुछि एवं आउ टिके क्लारिटी आसले से ही जानि परिबो वास्तव में यार कौन सबु बेनिफिट से पाई परिबो एबे पाई समय सरिछि ओआर बिक्स लाइव को इठ रखुछु नमस्कार।